Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Education, mother of all profession, that helps acquire all our possession. Like many precious diamonds, good educators are hard to find. Yet, sometimes one can discover a rare and priceless kind. A very warm good morning to one and all present here. On behalf of Dhanbad Public School, Hirak branch, I am honored to welcome Dr. Anil Kumar sir as a resource person for today's session. Now, I would like to request our Honorable Principal Ma'am and Dr. Anil Kumar sir to light the lamp of knowledge and wisdom. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Now, I would like to request our Principal Ma'am to present bouquet, a small token of appreciation to Dr. Anil Kumar. Dr. Anil Kumar is an MA in English, MA, and did his PhD on Kamala Das, an English poet from SKM University, Dumka, Jharkhand. He completed his education from Bhagalpur University and did his B.Ed from Vishwa Bharati Shanti Niketan, Bolpur, West Bengal. Dr. Kumar has a teaching experience of more than 34 years, where he started his career as a faculty of English at VIT Sindri, Dhanbad in 1986. He further joined as a principal at Modern Public School, Kodarma, Jharkhand. He then shifted back to Dhanbad and served as principal for 11 years at ISL ISM NHC. He served for 3 years as a registrar at KK University Nalanda, the first private university of Bihar. At present, he is serving as a principal at Crescent International School, Govindpur, Dhanbad since February 2021. He too has served as a panel judge at several seminars at university level like IIT ISM, Nav Nalanda University, SKM University Dumka, and publication and presentation of research papers in journals of repute. Dr. Anil Kumar is a CBSE certified resource person who believes in team building and has a passion for teaching through experiential learning. His hobbies are writing poetry, photography, gardening, and traveling.
Honesty, integrity, loyalty, and camaraderie are his strength, whereas he hates hypocrisy. It's truly a privilege to have the opportunity to learn from such experienced and knowledgeable educator. We are eagerly looking forward for an interactive session, sir. Now, I would request Dr. Anil Kumar to proceed the session. Thank you. Hi. Good morning, everyone. Are you ready? This is how we tell our students. Are you ready? Are you ready or are we ready? The moment we say that, it's you. There is a difference between you and your students. And what happens that the moment the difference is created, the learning gap is always existing over there. So this you attitude between you and your students, between us and our students, it must be healed. There must not be any gap. So whenever we enter the class, we say that today we are going to learn. Not today I am going to teach you. And in next year, right from 2024, if the NEP 2020 is going to be implemented, most probably, though it has not been authenticated by CBSE. But there is a larger possibility that we shall be going for NEP 2020 from the session 2024. And the entire classroom scenario will change. Scenario will change because we are still practicing the same thing, that we are shifting from teacher-oriented classroom to student-oriented classroom. Now, teachers won't be occupying the front seat. Teachers will be occupying the back seat. You will be an observer and you will be a facilitator, not a teacher. There is a difference between a facilitator and a teacher. I would like to have. I am not here to teach you anything, sir, a man. We are here to have 5 hours entertainment. And there is a 360-degree learning. Something we shall be learning from you, I will be learning from you, and you people will be learning from me. We shall be sharing our ideas in 360-degree angles. So, I would like to know, don't hesitate to voice your concern, don't hesitate to communicate. We would like to know what is the difference between a teacher and a facilitator. I think you will be able to know. I know you. Thank you, sir. A teacher can teach in a class, but as a facilitator, he can indulge the students and engage them in exploring all the different ideas that we have to give to them. And most probably the students are really going to learn in this way. Okay. Some more sharing of ideas. Yes. Good morning, sir. Good morning, everyone. Teacher is imparting the knowledge. Suppose one chapter we are teaching in the class, so I am prepared with the things that today I am going to teach them the lost spring of class 12, suppose. But if I am facilitating, then I am giving them the experiential learning there by putting some situation and bringing the things lively and means making it very much realistic and observant. Yes, ma'am. Brilliant. Brilliant. Give a big hand to ma'am. You deserve a trophy from me. What's your name, ma'am? And what do you teach? I think you teach English. Is it okay? Myself is Smriti Thakur and I teach English.
which level? La 11th. Now, one important thing is over here. Let us understand. Let us have a discussion upon, because we are going to implement NEP 2020 in our classroom. What is the one word that describes NEP 2020? What is the one word? I would like to have another mic here now. What is the one word, single word is there, which describes NEP 2020? That is the soul of NEP 2020. Yes, sir. I think, sir, it's a skill development. Skill development, it is one part is there. Skill development is one part, yes ma'am. I think it is holistic development of the children. Holistic development, okay ma'am, thank you, yes. It's child-centered. Child-centered education, some more explanation, some more definition, some more information about NEP 2020. Yes. We have been, CBSE is conducting CBP. What is that CBP? Capacity building program. Capacity building program. And this capacity or competency is the soul of NEP 2020. It means that we are giving our students that much of knowledge, that much of the skills, and that much of attitude just to have himself at the forefront of everything. This capacity or competency is the soul of NEP 2020. Now, how can we know what is competency? How will we understand competency? What is competency? We teach our students, and when we teach our students, at the end there is learning out. There is learning objective and there is learning outcome. At the end, when learning outcome is there, at the end when learning outcome is there, what are the things that we get? What are the things that we expect from our students? Sir, I would like to have your ideas. I would like to have your ideas, sir. It should never be a one-way interaction. It should be two-way interactions. Yes. Be competent and to overcome the challenges, to face the challenge and to overcome that challenge. Okay, sir. Yes. To be competent. It's okay. So, in competency, how can you judge, or how can we judge rather, that the child has become competent when you have finished one particular chapter? How can we judge? The only one thing is the assessment that we people give. Excuse me, sir. Yes. So, judgment ends after the class. When we take a 40 minutes classroom, then first of all we have to follow the 5E lesson plan. And at last the evaluation is done. Whatever we are doing in the class, that can be judged at the last what they are teaching by asking the questions, creating the situations and listening to them how they are going to handle the situation. If I have done everything in a correct manner, then the student will be able to describe the thing perfectly. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. It's good. Good answer. Yes. Apply
write the knowledge he has attained. Yes, exactly. This is what we just wanted to listen. We just wanted to hear that whatever your students have been able to understand, learn after the end of the chapter, that skills, knowledge, and the skills, whatever they have been able to learn, whether they are able to apply in a real life situation or not. This is what we mean by competency. So in competency, there are three things. First is knowledge, another is skill, and the third is attitude. Attitude is very important. When our students when they are completely having the concept, they are able to apply them in a real life situation, or they are able to apply in the questions that we normally frame. So in that, when they are successful in doing, we give them appreciation, a positive attitude develops. So the attitude of positivity and negativity entirely depends upon our teaching. If our students are competent enough, if they are confident, if they think that they are able to understand everything, whatever we have been able to teach them, so ultimately the end product is the positive attitude, positivity. Yes, I can. Yes, we can do. So once students think that I can do or we can do, it means that they are having a positive attitude. They will be away from negativity. So in NEP 2020, the soul is competency, and competency means knowledge, skills, and attitude. These are the three things. Now, we normally say that knowledge is power. Knowledge is power, or knowledge is power. Okay. Whether knowledge is power, how many of us agree that knowledge is power? Everyone. Yes, everyone. Then what is wisdom? If knowledge is power, then what is wisdom? Yes. I would say that wisdom is a superpower, sir. Momita. Yes. I know. Good morning, sir. Yeah, good morning. Knowledge, wisdom is? Wisdom is a superpower. Superpower. Okay. And some more. Yes, sir. We would love to hear from all of you. Yeah. Knowledge is power and wisdom is implementation of that knowledge. Yes, exactly. Give a big hand to sir. So what happens that whenever we are applying our knowledge, we gain wisdom. And when wisdom is there, it is wisdom is power, not the knowledge. If we are having knowledge, suppose, and we are not able to apply that particular knowledge, then what is the use of that knowledge? Sir, this is just for you. Sir, I would like to have your introduction. I am Arun Kumar, IT teacher, PGT. IT. Okay, sir. Thank you so much. So, NEP 2020, we have been able to discuss. Sir. Now, what should be our role in implementing NEP 2020?
First of all, we must have a desire. We must have a passion to implement. I would like to know what is the difference between a desire and ambition? What is the difference between desire and ambition? So these are the small terms that we need to judge on. Yes. Ambitious means which I like to do, which what is my ambition, what I want to do in my life. I think it's that. And desire? Okay. Desire is our wishes. And ambition is what I want to do. Yes. I want to become Narendra Modi. No, one thing is that I want to become Narendra Modi. Yeah. Whether I will be able to. Desire we think we have to do, and ambition we have to do the things. We have to do. One word is very important. We have to do. And something more, sir. Sir, learned faculties. Desire will Promote, sir. Yes. For desire we have to For desire, we have to deserve. Okay. Sir, everybody has a desire. मुझे भी मुकेश अंबानी बनने का शौक है. I do have the desire of becoming Mukesh Ambani. Desire is our passion. Yes. Yes, ma'am. Good morning, sir. As per I feel, desire means only a small wish that I make, and ambition means that a strong desire that drives me to work day and night. What happens that in desire, we always wish. Wishes are our desire. In ambition, there is a passion, and we put our 101% in order to achieve that desire. When we are putting 101% to achieve that particular desire, it becomes ambition. IIT के लिए जो लोग तैयारी करते हैं वो झोंक देते हैं अपने सारी चीज़ों, उनके लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं होता, दिवाली और दशहरा हर रोज जो है वो पढ़ते हैं. It's ambition. So, we must have an ambition to effect a change. We have to bring a change. And how we are going to bring a change? We are going to bring a change in order to make our student competent enough with the skills and one character. What do we understand by character? Yes, Priya. Priya happened to be one of my students. Jaja ma'am happened to be one of my colleagues. Momita was my student. Yeah. Good morning, sir. So character is like skill. First thing I can say about skill. Like skill is something that we need to learn. We need to upgrade ourselves with the help of skill. And with the help of character, it is a determination of doing something, like for upgrading ourselves, for learning some new skills. We need to be determined. We need to understand how and what we can do. Yeah. Thank you. Some more understanding of character. I am presenting myself. It is one of the parts of my character. Okay? It is one of the parts of my character. What exactly? I think your name is Elliot. Yeah. You belong to English department? Yes, sir. Yes. Okay. So you know Shakespeare and all those. Character is destiny. Character is destiny. This is the UV in Shakespeare.
what is a character? I do have a character, we do have a character. Everyone is having character. When an individual has his or her own personality and whatever they portray related Yeah, to... exactly. This word is there. Whatever we portray, that is whatever we reflect, is our character. And this, what we talked about, positivity and negativity. These are parts of like whatever characters we are portraying, different qualities that we are portraying. Yeah, the qualities that we reflect from our personality is our character. Yes. Okay. Yes. Okay, ma'am. Thank you so much. So, we must have an ambition to effect a change. We must strive for development of skills and character. The next part is that we must shift ourselves from teacher-centric classroom to student-centric classroom. What happens then? The teacher-centric classroom, it is we people who keep on speaking and the students are a mute listener. Whenever we ask questions from our students, then only they answer. Otherwise, they normally bow their head and listen to you. They are scared of us. They are scared of the punishment also. So, when we put them into entire activities, we initiate the activities and occupy the back seat. Let the learning unfold in the classroom. And if the learning is being unfolded in the classroom, you are merely the facilitator sitting at the back seat. And you observe everything. Whenever there are certain problems, you guide them. Whenever certain problems are there, you guide them. You are acting as a facilitator. So, what happens that we are shifting from teacher-centric classroom to student-centered classroom. If we go on integrating art, we shall be discussing all these things in the later part of it. When we are introducing art in our teaching, when we are integrating sports in our teaching, when we are integrating fine art in our teaching, performing art in our teaching. So, what happens? That the entire classroom is engaged. And when your entire classroom is engaged, what happens that there will be no more backbenchers. The entire students will be participating and learning will take place through experiences. This is the beauty of NEP 2020. And an experiential classroom. Classroom will be, you will be putting them to activities and learning will take place through activities only. It is experience. Learning by doing. Learning by doing is an experience. But there are certain more things are there in experiential learning we shall be discussing later on. And the next part is the inculcation of 21st century skills. Now, we would like to have your ideas what exactly we understand by 21st century skills. Yes, ma'am. Use of science and technology means Yes, technology is one part. Like in the class we are using the smart class. Smart class. We are putting our students to media literacy. Exactly, sir. Okay. Then we are putting them to certain information from the internet, that is media literacy. Even in the project also they are involving themselves to the science The and PowerPoint technology. presentation and all those things, the technical skills are there. And one is, this is one part. Another part, sir, ma'am. 21st century skills, it means that, yes.
Collaboration. Collaboration is there. One part of 21st century skill is collaboration. Yes. Some more ideas? Yes, sir. Rote learning to be abolished. Yes. Rote learning should be abolished, and then Practical knowledge to be given to them. yes. Doing that. Learning by doing, Learning by understanding first of all, and doing first of all, and then understanding the concept. Experiential learning. Experiencing. Yes. Some more. So, first part is academic skill. 21st century skill is the academic skill. Knowledge, its application, that is competency. Second part is technical skills, that man will do. Then third part is social skills. In social skills, we do have interpersonal skills. We are preparing our future leader. We are putting them in a frame of getting leadership training in our school, right from assembly, in the classroom, and other activities, whatever activities, sports and everything. And a leader must have a good interpersonal skills. Interpersonal skills it does not involve only the communication. It involves letting other person do the thing and appreciate. It means that you give your fellow being, you give your fellow person, you give your fellow members an opportunity to grow with you. You let other people grow. This is one part of interpersonal skills. So, social skills, then there are certain managing emotion, managing stress, and how we cope up with certain challenges in our life. This is important. Now, I would like to have some of your experiences. All of we have confined ourselves during Corona period. What was the fear and how we coped up Corona? How we coped up Corona? All these things will come to one word, that will be the adaptability. A 21st century leader must be adaptable to a particular situation. When we are preparing a 21st century leader, the leader is not confined to India only. He is supposed to be a global citizen. And a global citizen, it means that he will have different culture. He will have different environment. He will have to deal with different people. He will have to deal with different languages. And there must be his own interpersonal skills that he will be utilizing when he will be interacting people not in India but also in foreign countries. So we are preparing our students to have the 21st century skills. Don't start all the ACs. The generator is there. पूरा वहाँ से लेके आए
that was the thing that we have done. We shall be discussing in detail what exactly the 21st century skills are there and how we are going to inculcate the concept of or the qualities of 21st century skills on our students. So we were just discussing how did we cope Corona. Yes, ma'am. You were there in Corona period in Dhanbad only. How did you cope? We all were inside the house. You were in your house. मैम मैं बुलवाऊंगा आपसे. नहीं बोलेंगे तो मैं बुलवाऊंगा. आप लोग बोलने पड़ेगा. चलिए. आप नजदीक लाइए माइक और बोलिए. English Hindi we don't have. I will be acting in bilingual पर probably. अब हिंदी English Bengali सब बोलो मैं समझ सकता. Yes ma'am. कोरोना पीरियड में क्या क्या किया आपने बताया? फैमिली के साथ थे. चलिए गुड. और क्या क्या हुआ? Yes. Now, learning making different types of dishes. Number one, everyone was confined to his or her house. Number one, okay. And what were the challenges at that particular time? Your ma'am might have told you that go for the online classes. And at that particular time, we had our classes. We never knew the online classes. हम लोग मुझे भी नहीं पता था. ये अंग्रेजों के यहाँ होता था, फॉरेन में होते थे, हमारे यहाँ नहीं होता था. It is the best lesson that we have learned through from Corona period. Yes. They introduced with the Zoom classes. Zoom classes. We did not know about anything. How to? We never how? knew. We never knew what is Zoom. What is Zoom? Zoom and all. Online exam was Google form exams. First we learned and then we taught everyone and then we used to conduct. And we were also scared कि बच्चा हमारा चोरी तो नहीं करेगा. Yes. है ना? हम लोग सोचते थे कि बच्चे के पेरेंट्स बता देंगे. हो रहा. मुझे याद है जब हमारे स्कूल में जब हो रहा था ये सब चीजें, तो some of the parents were intervening. यहाँ से वहाँ जा रहे थे. Some of the mothers, they were peeping. Yes, whispering also. कोई आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो whisper कर रहे हैं. Yes, within 5 minutes. चलिए, these are the challenges. मैडम क्या क्या dishes बनाया आपने जरा बता दो. समोसा बनाना सिखाया. Like first time I made samosa. Okay. और मैम? क्या? पुचका. मैम ने पुचका बनाना सीखा. Good. Thank you so much. One thing is there. We had a fear psychosis. जब मैं बाजार से आता था थोड़ी दूर जा करके और घर आता था तो लगता था मुझे कोरोना तो नहीं हो गया. Yes, sanitize everything right from top to bottom. Okay, सब्जियां लाता था तो 10 बार नमक और पानी और एक तो हमारे केमिस्ट ने एक तो दिया था ब्लू टाइप की दवाई, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें सब्जियां को डुबाता था. Yes, it was very much comfortable, but it was blessing in disguise also कि मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे कोई नहीं पहचानता. So that was the best part. And the best part was that we have learned to adapt ourselves in a particular situation. Yes. Lockdown word के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता था. Yes. We never know. Lockdown जब मोदी जी ने लगाया तो that was a different story. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अडेप्टेबिलिटी सीखा.
अडेप्ट करना, अपने आप को एक सिचुएशन के साथ में ढालना, अपने आप को एक सिचुएशन के साथ में अडेप्ट करना हम लोगों ने सीखा. And that adaptability is one of the important part of 21st century skills. मैंने कहा कि when we are preparing our students as a global citizen, so in being a global citizen, they will have to interact with different people in different environment, different milieu, different languages, different cultures, and how they adapt themselves in a particular situation. That is the beauty of 21st century skills. Sir, next. फ्लाइट पे एक आदमी बैठा था, उसके बगल में एक बच्ची बैठी थी और वो बच्ची हैरी पॉटर पढ़ रही थी किताब, और हैरी पॉटर पढ़ते पढ़ते यूं देखती, हंसती, स्माइल करती, पढ़ती, सब अपना काम कर रहे थे. और फिर वो एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की कि सबको पता लगा कि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है. एयर होस्टेस ने कहा कि अभी हम कॉफी चाय नहीं सर्व कर सकते क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है, थोड़ा टर्बुलेंस कम हो जाने पर हम आपको बेवरेजेस सर्व करेंगे. सबको पता लगा कि ये केवल टर्बुलेंस नहीं, कुछ तो गड़बड़ है हवाई जहाज में. इतनी जोर से हिल रहा है, नीचे गिर रहा है, आसमान डर गए, सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. और पायलट ने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी. जब पायलट ने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग कर दी, सब बिल्कुल घबरा गए, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पैनिक की स्टेट. और ये बच्ची हैरी पॉटर पढ़ रही है, अभी भी मुस्कुराते हुए हैरी पॉटर पढ़ रही थी. बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लेडीज, सब लोग चिल्ला रहे, ये बच्ची किताब पढ़ के मुस्कुरा रही थी. फाइनली लैंडिंग हो गई, इमरजेंसी लैंडिंग. किसी को कुछ नहीं हुआ, छोटे-छोटे बच्चे थोड़ी कुछ नहीं हुआ. सब लोग सेलिब्रेट कर रहे, चिल्ला रहे, ये पूरा बच गए हम, सेलिब्रेशन. तब वो आदमी बैठा था उस लड़की के बगल में, उसने पूछा, बेटा इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, प्लेन हवा का पूरा ऊपर नीचे, तो सब घबरा रहे थे, सब चीख रहे थे, सब डरे हुए थे, तुमको डर नहीं लगा बेटा? तुम तो मुस्कुरा रही थी, हैरी पॉटर पढ़ रही थी तुम. लड़के ने कहा, नहीं नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई. बोले कैसे? तो बच्चे ने कहा, क्योंकि इस हवाई जहाज, इस फ्लाइट के पायलट मेरे पापा है. और जब हवाई जहाज के पायलट पापा है तो मैं क्यों चिंता करूं लैंडिंग की? बाकी सबकी बात तो दूर, मेरे पापा को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगे किसी भी हालत में मेरी बेटी को सही तरीके से लैंडिंग कर. जब पापा उधर है तो मैं क्यों चिंता करूं? चिंतन क्या है कि पापा प्लेन चला रहे हैं ना. जब पापा प्लेन चला रहे हैं, ये चिंतन है, तब फिर बच्चे को चिंता करने की क्या जरूरत है ना? और इसीलिए जीवन में चाहे कितनी मुसीबतें, कितनी कठिनाइयां, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दुविधाएं आती रहे, जब आपको ये पता लगे कि ईश्वर आपके साथ है हमेशा, इस चिंतन से चिंता धीरे धीरे घटती है. Now, we are the God to our students. हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए ईश्वर हैं. ऐसा ईश्वर जिस पर उनकी अटूट आस्था है, जिनको लगता है कि मैम हैं या सर हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा. Now the thing over here is that अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा दिया कि GIRAFFE जिराफी, GIRAFFE जिराफी, तो उसके पेरेंट्स चाहे कितना भी बोल लें, वो पूरी जिंदगी जिराफी ही बोले.
No, my ma'am told me it's giraffe, not giraffe. This is the trust that our students repose in us, in the teacher. And we have to live up to their expectation. Give a big hand to all the teachers inside us. Now, we have discussed teacher and facilitators. Are we smart enough? Are we smart enough? Yes, sir. Yes, everybody is smart. Yes. Yes. Who said that? Yes, I am smart. Please, there is a man. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How will you prove that you are smart? I engage my class, I talk with my students, and I perform different activities in my class so that my children can understand. I understand their needs and then I work according to that. That's why I feel I am smart. You are smart. Your principal appreciates you being a smart? One thing is there, whether your principal appreciates you being a smart? You are devoting yourself in a lesson, or to a lesson rather, for more than the specified period, in order to make your students understand. खूब बढ़िया से समझाना है, ठीक है? 4 पीरियड आपको मैम ने दिया एक चैप्टर को खत्म करने, आप ले रहे हो 8 पीरियड, 6 पीरियड. Are you smart? आप क्लास में जाते हो तो लेसन प्लान बना के जाते हो, एक गोल होती है आपको, क्लियर? एक गोल होती है, उसी गोल को लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम, यही गोल हम लोगों का होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो थ्रू द लर्निंग ऑफ योर स्टूडेंट्स. आपने अपने बच्चे को कितना बढ़िया से सिखाया, कितना नॉलेज दिया, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए उसको स्किल उनके शार्पन किए, और फिर आपने असेसमेंट किया. असेसमेंट करने के बाद आप उसको मार्क्स देते हो, और जब आपके बच्चे 90% प्लस लेकर के आते हैं, you give a big pat on yourself and your principal and all the teaching fraternity, they appreciate you. Okay. Then you teach them accurately. जो चीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव थी आपकी, आपने उसी के हिसाब से पढ़ाया accurately. And you finished everything within a stipulated time. A time. Then you are a smart teacher. Smart. Board. Yes, sir. Yes. Please bear with me. Please bear with me. My handwriting is too bad. Okay. Just forward. नहीं कोई बात. If we achieve this particular thing, we are a smart teacher. We have a specific objective. If we have been able to achieve that specific objective in terms of our learning objective and learning outcome, that is specific. And next is measurable. After assessment,
You have the, you, No need to start. No need to start. Sit down. after assessment, after your assessment, you measure the performance of your students. That is measurable. And whatever goal you have set, the goal must be achievable. We must be able to achieve within the stipulated time or whatever the time frame has been as per the syllabus and all those things. So achievable. It must be reasonable enough. It must not be lofty enough. आप बड़ा सा प्लान कर लिया, हमारे बच्चे ये सीख लेंगे, वो सीख लेंगे, और अल्टीमेटली जब वो नहीं सीख पाते हैं, then we feel ourselves completely fail. So it must be reasonable, and one part is there. One part is, we can add it here, that is realistic. The goal must be realistic. हमारे पास में suppose कीजिए कि everywhere in the world we have 3 categories of students: good student, average students, and below average students. We don't term them as poor right now. It's banned. तो ये जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए हमारे पास में जो प्लान है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए. बिलो एवरेज को हम 90% वाले नहीं बना सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हमारी गोल ये होनी चाहिए कि हम बिलो एवरेज वाले को एवरेज वाले के ग्रुप में ट्रांसफर कर पाए. दैट इज द थिंग. तो दैट इज रियलिस्टिक and reasonable. And finally, it is time bound. हम सारी चीजों को टाइम पे खत्म करते. That is time bound. तो ये जो है, अगर हमारे पास में ये जो एक्रोनीम है SMART, अगर ये चीजें हमारे अंदर है, then ma'am, really you are a smart teacher. We are a smart teacher if we are specific, if our goal is measurable, achievable and realistic and time-bound. So next, we have discussed let us have, because all these things, whatever we are discussing right now, we shall be using it in the later part. Learning objective में क्या हुआ कि हमको ये चीजें सिखानी है. लर्निंग आउटकम में क्या हुआ कि नॉलेज हमने दिया, स्किल्स दिया, और स्किल्स किस चीज के लिए? अप्लाई करने के. स्किल्स अप्लाई भी किया, उसके बाद स्किल्स जो भी चीज उसने सीखा उसको एनालाइज भी किया, इवैल्यूएट भी किया, और उस स्किल से उसने कुछ नई चीजें पर इजाद भी की, नई चीजों में अप्लाई भी की. अगर ये चीजें होती है, स्किल, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग द नॉलेज, इवैल्यूएटिंग द नॉलेज एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू, then the learning outcome is achieved. Learning outcome is perfect and our teaching is perfect. If it is not happening, we need to revisit the strategy. We just need to revisit the strategy. हमको फिर अपने strategies को बदलने होंगे. जो हमने किया है, अगर ये चीजें लर्निंग आउटकम में हमारी नहीं मिलती हैं, हमारे स्किल्स बड़े अच्छे से हम लोगों ने बच्चों में डेवलप नहीं कराया, अप्लाई नहीं कर सका अपने नॉलेज को, एनालाइज नहीं कर सका सिचुएशंस को, उसके बाद इवैल्यूएट नहीं कर पाया कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा ये है, कम में अच्छा है. तो इस चीज़ में इवैल्यूएशन अगर नहीं हो पाया,
अपने नॉलेज को क्रिएट नहीं कर पाया किसी नई चीज में, देन वी हैव टू रिविजिट आवर स्ट्रैटेजी। हमें फिर अपने आप को फिर रिविजिट करने होंगे सारे स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, everybody knows about. This is experiential learning. अभी हम लोगों ने कोरोना के बारे में बात की। How we have been successful in coping with the corona, and in corona period, how we have grappled with the situation, how we emerged victorious. So it is the person who is at the center of everything, a person who is at the center of all activities, and a person creates the society, and society creates the nation. It is people who create the society, and it is the society, group of people in a society, they create the nation. How we cope up with our situations, how we adapt to our situations, we have already discussed all this. So next, these are the challenges that 21st century people, we are having all these challenges. So next, challenges our students face in class, challenges our students will face as a global citizen. ये 21st century skills पर लोग हमारे क्लास में क्या क्या challenges होते हैं मैम? आपके क्लास में क्या क्या challenges हैं? आप जब पढ़ाते हो तो आपके क्लास में क्या क्या challenges हैं? आपके स्टूडेंट्स कैसा चैलेंज फेस करते हैं? Sometimes they don't listen. They do not listen. Good. ये आप why they don't listen to you? This is very important. Why they don't listen to you? Why they don't pay attention to you? Why? Some students are not. Some students. Why some students? Why not all? They're not interested in the topic. They don't understand. This is a big problem. This is a big issue. They don't understand. So what is our purpose? To make everybody understand. आप किसी को थिक हेडेड नहीं कह सकते हो. You are a thick headed. You can't understand. तुमसे नहीं होगा ये नहीं. If अगर आप कहते हैं कि you are thick headed, nobody is thick headed. Okay, you can't understand, no, everybody can understand. We need to change our strategy. आप अपने बच्चे को ग्लोबल सिटीजन के रूप में तैयार कर रहे हैं. 21st सेंचुरी में आपको जरूरत पड़ेगी. NEP 2020 के अंतर्गत आपको जरूरत पड़ेगी. तो उसमें क्या करना है? लैंग्वेज को ठीक करना है. नंबर 1, लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए. उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. नए एरिया में वो एडजस्ट करना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. क्रिएटिविटी होनी चाहिए. उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक ग्रुप के साथ काम करने की आदत होनी चाहिए. ये चीजें अगर आप करेंगे, it means that we are preparing our students for 21st century skills, and we will be needing 21st century skills in the classroom, inculcating them right when we implement NEP 2020. Yes. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? मैं आई वुड लाइक टू नो. हम सब लोग टीचर हैं. यस, आपके स्टूडेंट क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं इन द क्लास? The main problem is that the communication problem. Communication. किसकी communication? We speak in English and most of them they are not comfortable to understand. Okay मैम, करना क्या चाहिए? Bilingual होनी चाहिए. बाइलिंगुअल होने में कोई बुराई है क्या? No. हमारा स्कूल खराब हो जाएगा क्या? No,
sir. हाँ, तो फिर बाइलिंगुअल अगर हो करके अगर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को समझा पा रहे हैं, यस यस मैम, बाइलिंगुअल हो करके अगर हम एजुकेशन को रियल सेंस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो बाइलिंगुअल होने में बुराई क्या है भाई? हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी हम बढ़िया से समझते हैं और हिंदी में सारी चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें कुछ इनोवेट कर सकते हैं। अंग्रेजी वाले क्या करेंगे उसमें? चाइना में पढ़ाने में अंग्रेजी नहीं होता, रूस में पढ़ाने में अंग्रेजी नहीं होती, ठीक है। जिन जोहल और अभी एडीपी में क्या किया, आपको मातृभाषा में पढ़ानी है, यही कारण है। जो लोग बैठे हुए हैं रिसर्च करके, उनका यही कहना है, लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर इन अंडरस्टैंडिंग। और ये जो 5+3+3+4 वाला जो रहेगा, उसमें 5 तक के तो कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा, आप उसको मदर टंग में पढ़ाइए, सब्जेक्ट चॉइस में कोई बैरियर नहीं है। यस, small children, they don't want to sit for long time. yes. क्यों नहीं? Lack of concentration. Lack of concentration. अच्छा मैम, एक चीज बताओ, आप सब लोग ईमानदारी से, कितने लोग मुझे गाली दे रहे हो? कितने लोग मुझे गाली दे रहे हो? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग मुझे ये बोल कर रहा है बंदा, मुझे कितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं? श्योर? अरे श्योर, कोई आदमी मुझे गाली नहीं दे रहा है? श्योर? ठीक है, सब लोग मुझे सुन रहे हो? क्यों सुन रहे? मैंने क्या किया? मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। Communicating. अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं सुनते हैं, it means that there is a communication gap between you and your. मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा आपके क्लास में बोलता नहीं है, वो अपने घर में सबसे ज्यादा बोलता है। Parents told us the same thing. घर में बहुत बोलता है। सीमा में से यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन घर में सबसे ज्यादा बोलती है। बात समझ रहे हैं? तो इट इज आवर फेलियर। अगर हमारे स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और 21st सेंचुरी स्किल्स में 4 C's होते हैं, critical and critical thinking and problem solving, creativity and innovation, then collaboration and finally the communication. तो ये अगर communication नहीं है, then we need to revise our strategy. आपको क्लासरूम को इंटरेस्टिंग, मैं क्या रहा हूँ सर, मैं आपको पढ़ा थोड़े रहा हूँ, हम लोग संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम लोग मजे कर रहे हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं। क्रिएट दिस एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। अगर ये एनवायरनमेंट हम क्लासरूम में करते हैं, तो एवरीबडी, देयर विल बी नो मोर बैक बेंचर्स। जो आ रहे हैं समय, जब आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिएगा, तो जो पीछे वाला बच्चा कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी पार्टिसिपेट करेगा एंड ही विल स्टार्ट लर्निंग। सो द बेस्ट पार्ट विल बी दैट देयर विल नो मोर बी एनी बैक बेंचर्स। सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग सीखेंगे। सर नेक्स्ट। सर, आप लोगों ने कई सेशंस किए, वो इसको सब लोग जानते हैं। मुझे बताइए, खास करके सीनियर 6 ऑनवर्ड्स जो लोग पढ़ा, 2 क्वेश्चंस होते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये कहां से शुरू होगा? लोअर ऑर्डर कहां से शुरू होगा? हायर ऑर्डर। वी वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन। यस, Remember is the lower order. यस, रिमेंबर इज द लोअर ऑर्डर। ठीक है, एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये लोअर ऑर्डर होगा।
gradual improvement होगी. Okay, some more explanation. Yes sir, thank you. जो सीनियर में पढ़ाते हो, सीनियर टीचर सर, आप लोग सब लोग सीनियर्स. Yes. Sir, according to me, from analyze onwards, it high order. Analyze or Because if they can analyze, they can create the new thing. एप्लीकेशन नहीं होगा सर. नहीं सर, अप्लाई में तो अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं. अगर हम सपोर्टिंग कर सकते हैं सर, कर लेंगे, बट वो नया चीज क्रिएट जब तक नहीं करेंगे तब तक दैट इज नॉट हाई. डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच. गिव अ बिग हैंड टू सर. देखिए क्या है ना कि रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग. रिमेंबरिंग इट मींस व्हाट you recall the facts, whatever we have taught to our students are able to recall the facts. आप MCQ लगा देते हो, recalling the facts. Okay, understanding what the fact means. जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है. ये जो दोनों पार्ट है, remember and understanding, खास करके ये हमारे lower order thinking skills के साथ में जुड़े. और application, that is applying the facts, rules, concept and ideas जो उन्होंने सीखा. इसके बाद breaking down the information, then evaluating का मतलब जो है, जो चीजें सही है, this is more important, this is less important. more important को select किया. उसके बाद then we keep on creating something. We keep on creating something. तो यहाँ जो है remembering and understanding lower order thinking skills हैं, application, analysis, evaluation and creation. ये आपके higher order thinking skills होंगे. आप जब questions बनाएंगे, आप लोगों को सर handouts दिया है मैम, handouts दी. जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उतने जॉब्स होंगे. ये देखिए, और ये में ये जो ये होंगे. इसको क्या करेंगे, पेज पर तो होगा क्या कि जब आपके पास हैंडआउट्स आएंगे सारी चीज़ों का, वी शैल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली कि लेसन प्लान अभी हम लोग कैसे तैयार करें एनईपी 2020 के अंतर्गत. कस्टमाइज बहुत चीज़ों को हम लोग को करना. कस्टमाइज इन द सेंस कि बहुत चीज़ें सब्जेक्ट वाइज कुछ अलग होंगे, लेकिन जो हमने तैयार किया हुआ है ये एक कॉमन है जो आप सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हो. तो नेक्स्ट हम लोगों ने इस पर बात किया था. नेक्स्ट हम एक मिनट से कॉम्पिटेंसी इन एकेडमिक स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. लाइफ स्किल्स हम लोग एडेप्टेबिलिटी की बात किए थे. दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ स्किल्स. कम्युनिकेशंस की बात किया था. मैनेजिंग स्ट्रेस, कोरोना में की बात किया था कि हम लोगों ने कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया. So all these things are the part of life. How we are able to handle our life, handle the problem of our life. यही हमारा लाइफ स्किल्स है. आपके लाइफ स्किल्स अलग हो सकते हैं, मेरे लाइफ स्किल्स अलग. आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैं थोड़ा डरपोक हूँ, तो आप चीजों को ज्यादा माने ब्रेवली या ज्यादा इन अ डाउटिंग वे यू कैन डू इट. मैं थोड़ा डर के करूँगा, लेकिन करूँगा मैं भी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से करें. ये आपका लाइफ स्किल है और ये मेरा लाइफ स्किल है. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स। पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली 21st सेंचुरी स्किल्स, एक बैकग्राउंड मैंने सारी चीज़ों की डिस्कस कर दिया। और अब इसमें से हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट लर्निंग स्किल्स, देन लिटरेसी स्किल्स एंड देन फ्लिप्स। लर्निंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें होंगी? 4 C's होंगी, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी होगी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। थर्ड होंगे हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड फाइनली होगी कम्युनिकेशन, जो हम लोगों ने बात की। लिटरेसी स्किल्स में हमारे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, सारी चीज़ों को सुन रहे हैं कि हमारे और हम बहुत सारे फेक न्यूज़ चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं भी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने कुछ एंटी इंडिया कैंपेन में कुछ चीज़ें चला करके रखा हुआ था। लोग कहते हैं तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज ऑलवेज कि वो चाइना से स्पॉन्सर्ड थे। तो हमें एज अ चाइल्ड अपने बच्चों को या एज एन एडल्ट हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि कौन सा न्यूज़ हमारे लिए सही है और कौन सा न्यूज़ हमारे लिए फेक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सर, एक तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो गया। मीडिया लिटरेसी, एम इज मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का मतलब जो मीडिया से हम लोग देख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, वो मीडिया लिटरेसी। एंड देन टी इज टेक्नोलॉजी, टेक्निकल लिटरेसी। हम अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, पावर पॉइंट सिखा रहे हैं, पाइथन सिखा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं। हम उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखा रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर टेक्निकल इंजीनियर की तरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, या किसी भी फील्ड में जाए टेक्नोलॉजिकली उनको साउंड। हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं सो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल बी एबल टू हैंडल कंप्यूटर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। दैट इज इट। देन लाइफ स्किल्स। अभी हम लोगों ने कहा लाइफ स्किल्स हमारे और आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों के कुछ पैरामीटर्स हैं जो सब लोग उनको देखते हैं। फ्लिप, दैट इज क्या होता है कि अब पुराने जब सिनेमा की बात हो गई कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, ये सिनेमा में अच्छा लगता। निजी जिंदगी में वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। हमको फ्लेक्सिबल होना। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो वो टूटने वाली स्थिति रहेगी। नेक्स्ट इज एफ The L is leadership. Leadership, मैं बार बार कह रहा हूँ, it is the future leader. We are the leader in the classroom. You yourself are the leader in the school. You are the leader at your home. Of course, you people are the leader at your home. Then आगे बढ़िए। अब ये 4 C's जो हैं, ये यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। सर नेक्स्ट बढ़ाइए। आप देखे होंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट डज इट मीन? लेट अस हैव अ डिस्कशन। Think out of the box. Think out of the box. Okay, ma'am. Can you say? अब critical thinking है कि आप क्या पढ़ाते हो? I teach in Montessori. Montessori. तो क्या पढ़ाते हो? Sir, all the subjects. All the subjects पढ़ाते हो। We are the mother teachers. You are the mother teacher. A for apple पढ़ाते हो? Everything. ठीक है। एप्पल का A लिखना सिखाते हो? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद कहते हो क्या कि पहले A लिखो। So first we start with the lines. Yes. तो आप पहले लाइन सिखा दिया। Yes. स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सारी चीजें आपने सिखा दी। अब आप कहते हैं कि ए लिखो, ठीक है।
आप कहते हैं लेफ्ट स्लैंट, राइट स्लैंट, वन स्लीपिंग लाइन इन बिटवीन, इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, ये सिखा दिया। उसके बाद ए फॉर एप्पल भी सिखा दिया, क्लियर। उसके बाद आप कहते हैं कि आप बताओ एप्पल के क्या क्या यूजेस हैं। एप्पल का कैसा कलर होता है, ठीक है। एप्पल कौन कौन खाते हैं? आपका डॉगी एप्पल खाता है कि नहीं? क्लियर। तो क्या कर रहे हो आप? यू आर पुटिंग देम टू थिंक क्रिटिकली। आप कहते हैं कि ह्यूमन फूड, हो सकता है डॉगी ना खाता हो, तो आप कहते हैं कि ये एप्पल ह्यूमन लोग खाते हैं, क्लियर। तो बोलेगा क्या कि अमरूद जो है वो ह्यूमन लोग खाते हैं, उसके दिमाग में आएगा तोता भी तो खाता है। So you are putting them into The whole critical. concept. You initiate the critical thinking in the class. अब rote learning का जमाना खत्म करा था। Learning by playing. Learning by doing, learning by thinking, learning by thinking critically. This is more. अगर आप learning by doing, learning by thinking critically, innovating, ये सब सारी चीजें सिखा दे, then you are a smart teacher. फिर क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी, आप कोई चीज नया सीख करते हो, एक नया चीज सोचे, वो क्रिएटिव, कोई नया आइडियाज आपको सोचा, क्रिएटिव हो गया। कुछ वैसे आइडियाज हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ नई चीजें करते हैं। तो जो चीज एग्जिस्टिंग आइडिया है, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है, उसके ऊपर कुछ नया चीजें। We shall be discussing all those things. Then collaborative learning. कितने लोग हम लोग क्लासरूम में collaborative learning को प्रमोट करते हैं? कितने? How many of us? कैसे? And अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? पेन एंड पेपर के असेसमेंट को ही ग्रेड में चढ़ा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो पेन एंड पेपर पर बढ़िया नहीं करता होगा, लेकिन ग्रुप लर्निंग उसकी बहुत अच्छी होगी। हम लोग उसको मार्क्स देते हैं? नहीं देते। अब आपको दे रहे हो, अब आपको मार्क्स उसमें दे रहे होंगे। वो बच्चा जो ग्रुप में, अब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा डिबेटर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पढ़ाया, उस टॉपिक के ऊपर आपने एक डिबेट करा दिया, है ना, उस टॉपिक के ऊपर एक डिबेट करा। सोशल साइंस टीचर्स ने पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया और उसने कहा कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं और डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो सबको खुद का फंडामेंटल राइट्स है। आपने डिबेट करवा दिया कि देयर शुड बी ओनली वन रिलीजन, that is nationality, nationalism, and there should not be any religion. एक डिबेट आपने सुन करा सकते हैं? Then what we are doing, और उसके ऊपर क्या करते हैं? डिबेट कराते हैं। कोई प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट को एक कम्युनिटी लर्निंग के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया, जैसे आर्ट इंटीग्रेशन, उसको दिया और आपने ग्रुप बना दिया। क्लासरूम में हमने अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक, 3 क्लास डिवीजन डिवाइडेड है हमारा पूरा क्लास 3 रो में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन करा दिया। एक ग्रुप क्वेश्चन करेगा, दूसरा ग्रुप को आंसर करेगा और मार्क्स दे दिया। इस तरीके से 5 मार्क्स हर एक इसको। वर्ड मीनिंग का, वर्ड का अंत्याक्षरी करा। सारे क्लास तो इन्वॉल्व हैं और उसकी जो लर्निंग आउटकम होगी, इट विल बी मोर परफेक्ट एंड मोर एम्फसाइज लर्निंग, मोर प्रोडक्टिव लर्निंग। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि हम लोग जिस तरीके से
पढ़ाते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, वो फ्लॉप करें। और फिर अपनी बातों को कहना, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। फिर अपनी बातों को, हर बच्चे से आप बोलना चाहिए, हर बच्चे को बोलना, हर बच्चे से बोलते हैं तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। बहुत सारा बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन आप उसको प्रेजेंटेशन में डाल दीजिए, ही विल बी फ्लॉप, 2 लाइन नहीं बोल सकता। स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, 2 लाइन नहीं बोलते। और असेंबली में हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को देते हैं अपॉर्चुनिटीज, आपको बोलना होगा, इस हाउस में आप हैं, आपको ये चीज बोलनी होगी। दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर लीडर। दिखाई दे रहा है यहां तक? आपके पास पेपर है, लीजिए पेपर लीजिए, वी शैल हैव अ फन। एक एक पेपर लीजिए, पेपर को 2 फोल्ड कर लीजिए। एक टेंट की तरह, इसको A4 साइज है आपके पास, उसको एक टेंट की तरह 2 फोल्ड कर ली। और पेन है आपके पास, एक स्माइली बनाइए, 2 स्माइली बनाइए। लेफ्ट साइड की स्माइली आपकी होगी गुड एक्सपीरियंस एंड गुड लर्निंग, गुड एक्सपीरियंस एंड गुड लर्निंग। आप कोई भी चीज के लिए आप अपनी जिंदगी का वो अच्छे एक्सपीरियंस को आप अपनी जिंदगी का रिकॉल कीजिए, एक स्माइली बनाइए। कोई भी आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, योर बर्थडे एक्सपीरियंस, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया होगा, जब फर्स्ट गिफ्ट दिया होगा वो, आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया होगा वो, क्लियर? आपकी वाइफ ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया होगा वो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके जमाने में दिया होगा कोई बढ़िया गिफ्ट, तो उसको एंड व्हाट was the learning? First part, good experience. Second part is what was the learning? Yes, ma'am. Got it? Yes, one is higher than another. This is your experience. Write down your experience. हाँ. आप क्या दूसरी, और what was the learning? आपने उस experience से learning क्या हुआ? That was the thing. First वाला experience आप लिखिए, और दूसरी वाली experience, दूसरी जो smiley में ये लिखिए कि उस learning का क्या experience हुआ। Yes, नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से आपने लर्न किया, whatever in your life, whatever जो भी चीजें हुई, Got it, ma'am? Done it? Check.
You wrote your good experiences? No, मैं बताता हूँ. Sir, next. Now, second part में आपके bad experience क्या थे? और bad experience का जो lesson आपको हुआ, वो आज तक आपने भूला नहीं है. जो आपने के बैड एक्सपीरियंस थे, उसके जो लेसन मिले आपको, वो आपने अब तक किसी को आज तक भूले नहीं. I would like to know whether the teachers teaching in Montessori are acquainted with the teachers who are teaching in +2. Sure. बातें होती हैं बहुत ज़्यादा. We don't get that much time, but yes, we have cordial relations. ओके, सब लोगों के साथ में. चलिए. अब एक आदमी चलिए, आप मैम आप you work over there, find a partner and share your experience. आपके जो experience हुए और उस experience ने आपको क्या सिखाया? Anyone? I have to find a partner. Yeah. आप अपने जो experience हैं, good experience और bad experience, दोनों experience के बारे में किसी एक आदमी को जाकर के बताएं. And we would like to have the specific, what exactly was the lesson that your experiences taught you? So how that person will know what is my experience? आप बताओगे ना? Share. आप बताएं, शेयर करो, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करो. आप माइक मत यूज करो, धीरे से. Now, ma'am, whether your experience was similar to her, same experience you had, one you had, और दूसरा नहीं था. Good experience अच्छा था या bad experience? Good experience आप दोनों के common थे. Bad experience? Actually, I don't have any bad experience. I don't. ऐसा नहीं हो सकता है. हम अपने ये नो या I can't believe you. सर, आप लोग बिलीव करते हो क्या कि हमारी जिंदगी में कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ? It's very good. It's very good. आप बैड एक्सपीरियंस, लेकिन एक बात को याद रखो मैम. Do you agree, sir and ma'am, कि अगर बैड एक्सपीरियंस को याद नहीं रखना चाहिए? Do you agree? याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? Yes, exactly. और फिर गलती नहीं हो. दोबारा नहीं करेंगे. Bad experience always teaches us. They teach us a lesson. If we shall not repeat the same mistake in future. याद रखना होगा.
मैं बता दूं, आपको याद रखने होंगे आपके ये एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट टेलिंग यू। थैंक यू, टेक योर सीट। मैं जा रहा था DPS 4 सेशन लेने के लिए, अभी 1 महीने पहले। उसमें एक टोल नाका पड़ता है, और टोल नाका में मेरे आगे आगे ट्रक चल रहा था। आई वॉज ड्राइविंग, तो ट्रक वाला को हटाया, ट्रक वाला निकल गया वो आगे। मेरी गाड़ी में फास्ट टैग लगे हुए थे। आई थॉट दैट कि मेरे भी इमीडिएटली जो है रीड कर लेगा और मैं निकल जाऊंगा। और टाइम हो रहे थे, वहाँ 9 बजे का टाइम मैंने दिया हुआ था, और 8:40-45 हो रहे थे। आई हैव टू रश फास्ट में था। अचानक जैसे ही गाड़ी के पीछे में गया, ठीक है, ट्रक के पीछे, आई वाज ड्राइविंग ब्लाइंडली, मुझे पहुंचना था 9 बजे, और जैसे ही ट्रक निकली उसके बाद उसका जो डंडा था सीधे मेरे बोनेट पे पड़ा। That was the bad experience for me, और that was a lesson to me। चाहे मैं कितनी हड़बड़ी में रहूं, टोल नाके पे मैं हमेशा सतर्क रहूं। This is what our experiences teach us. When we have the experience in the class, when our students have the experiences in the class, and either their experiences are good, if we are teaching them nicely, it's a good experience. If they are not able to understand, अगर एक थप्पड़ लगा दिया उसको किसी क्लास में, तुम नॉटी हो, इस तरीके से एक्टिविटीज करते हो, एक थप्पड़ लगाया, जो experiences, they will always remember that experiences. Sir, हम लोग जब क्लास में पढ़ाएंगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। अब आइए, मैं थोड़ा सा आइए मैम आइए, आप चुपचाप बैठी हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, मैम आप आइए, आइए सीमा दी, सर आप, हाँ सर आइए। Yes. Don't write in that class, but they're very brilliant. Okay. Shall we force them to write? Okay. Let me finish this one. ठीक है, एक somebody else, मैम आइए। अपने अपने जूते उतार दो, अपने अपने जूते उतार दो सबको। यहाँ 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 उतर, यहाँ उतर, हम लोग यहाँ खड़े रहे। अब आइए, आप आइए सर, जूते उतारिए। जगह चेंज कर, चेंज करो, अपने अपने जगह चेंज। एक दो, ठीक है, चलिए अब जूता पहन लिया, सबके चप्पल जूते हैं सब पहन। पहनिए सर, पहनिए, पहनना पड़ेगा, पहनिए। आपने पहन लिया तो मैं भी पहनाऊंगा। आप जानिए तो सर, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि नहीं आएगा। चलिए वॉक की, चलिए एक दो बार और चलिए।
Clear? Stop. अपना जूता पहन लीजिए. We would like to know whether you were comfortable when you were wearing somebody else's suit. Sir, I was comfortable. I did it. Question is that whether your students are comfortable when you are teaching in the same method. You have three categories of students. The question is that you are not comfortable in wearing the shoes of others. The three categories of students will never be comfortable when you are teaching with the same methodology. What we need to do is that we need to customize our teaching. इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों ने कितने लोगों ने सेशन किया था कि आप लोग जो है ऑनलाइन सेशन में लगा करके कुकिंग कर रहे थे. अमूमन वही लोग किए. ऑनलाइन लगा दिया कुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लगा दिया अपना काम कर रहे हैं. इस बार प्रमोशन यही हो रहा है ना. चलिए आइए मैम, थैंक यू सो मच. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, थोड़ी तालियां तो जोर से बजाओ यार. The question is that we need to customize our teaching, and this is the need of the hour कि हमको अपने teaching को customize करना है. You are the leader of your class. You are the innovator, you are the creator. आप क्लास में तीन कैटेगरी हो सकता है कि एक लड़का स्लो लर्नर एकदम स्लो हो. अभी मैम अभी हम लोगों ने बात की. Few children in the class, one, two children in the class, they don't want to sit, but they are very intelligent, they don't want to write. Shall we force them to write? No. आपको क्या लगता है? आपको कैसे? Actually, their mother called us कि sir. हाँ, मैं देखता हूँ सीमा मैडम को बहुत फोन आते हैं. Yes ma'am. Mothers are in problem because whatever we are teaching in the class, they are not able to know कि आज क्या पढ़ाई हुआ मैम, बच्चा तो कुछ भी लिख के नहीं लाया है. But that child is very intelligent. He always used to stand with me before my teaching. He used to say, whatever I want to, if I dictate the topic, he started speaking on that topic. ये है वो है, पूरा बोलना शुरू कर देता है. But he don't want to write a single line. चलिए, solution किसके पास में? आप लोगों का. सर, सीनियर जूनियर कोई कहीं से भी, किसके पास में solution है इसका? What she should do? The child doesn't want to. The child is brilliant. The child does not want to write. Who has the solution? Yes. No ma'am. आप जो बोलेंगे सब solution है और सब सही है. I think because we are focusing on the rote learning, that is why we are just focusing. He is not writing, but if he is having the concept, he know what we are teaching and all, then we should consider that yes, the child is learning, because writing is just a part of teaching. So, and we have changed our process of assessment also. If the child can, suppose if I am teaching him colors, the child can identify the color, he know different object about of that colors, he has the concept of that color, but he cannot write the spelling. So in that basis I cannot judge the child that he is... Question is that how the child should be made to write. So for that we need to inculcate or values in child that is missing from the... So values in the sense like confidence, patience, faith, they need love and care in the childhood days. If we do that, now they will. मैम मुझे हिंदी में समझाओ क्या करना है. आप देखिए थियरी नहीं बनती, मुझे प्रोटेक्ट हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं. I told you initially this is 360 डिग्री लर्निंग. हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं.
और हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को So we need to motivate the child. Yes. यस देखिए कितने कितने हाथ उठ रहे हैं. गुड. कहाँ गया माइक दूसरा? सर यस. कहाँ से हाथ उठ रहे? यस. क्वेश्चन समझ लीजिए. क्वेश्चन ये है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, जैसे मैम पढ़ाती हैं वो आराम से जवाब देता है, ब्रिलियंट है, लिखना नहीं चाहता. Sir, we need to like appreciate the child first Yes. by giving rewards and every day motivate the child. Gradually the child will start. यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए. मोटिवेट करेंगे, गिव अ बिग हैंड टू हिम, ऐसे करके. आप इनके लिए बिग हैंड दीजिए भाई सब लोग. ओके, पहला मोटिवेट करना, उसके बाद रिवॉर्ड दीजिएगा. चॉकलेट तो रोज अगर स्माइली दीजिएगा तो प्रिंसिपल मैम आपको कहाँ से वेयर करेंगी ये बताइए. रोज स्माइली और चॉकलेट आप नहीं दे सकते हो. अच्छा, ओके, एक स्माइली दे दिया. वो स्माइली को कहाँ लगाओगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन. प्लीज लिसन, particularly in the junior section. हाँ, एक स्माइली. Not giving in like we are giving with pen only in the note. Something suppose we are writing. Yeah. In the notebook only. Suppose that child doesn't want to write, so we are giving. ओके, तो क्या करना है कि उसके क्लास उसके इसमें स्माइली डालिए उसके कॉपी में. ठीक है, उसकी कॉपी में स्माइली डाल देने हैं, स्टार भी लगा देने हैं. Only the child is knowing. So we need to appreciate, show it to Yes. He has done it. Child is knowing, parents are knowing, students are knowing. What about the reminder value? What about the reminder value? Reminder value. Yes. Yes, sir. Pramod, sir. Sir, according to me, the teaching that we want to do that child does not want to write. We have to change our strategy. We have to change our methodology. Means that we have to teach them using the art integrated learning. Many of times it is seen that child don't want to write the things, but if we are showing some drawings, using the drawings, we are teaching the alphabets also, and we are drawing something. So if the children will just attracted towards the drawing, he or she will be able to write also. Good. Thank you, sir. Thank you. The child is not writing. The concern is the child is not writing. And the drawing can be an alphabet. Sir, batches also. Sir, appreciation is the best part. अगर आप बच्चे को मान लीजिए वो लिख ही नहीं रहा कुछ भी और आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, आप उसे मोटिवेट करके थोड़ा लिखवाते हैं और आप उसके साथ साथ ये कहते हैं कि गुड एफर्ट बेटा, बहुत अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा लिखा. ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपने थोड़ा लिखा ना, कल फिर थोड़ा और कर लेंगे. अगर आपको मौका मिले तो आप घर पे इसको थोड़ा और ट्राई करेंगे. और अगर हम इसे रेगुलरली अप्रिशिएट करें, बच्चों को बताएं, देखिए आज इसने लिखा है ना. Yes, exactly. अगर आज This is the point. आप सिंपली बच्चे को मत बताओ, आप पूरे क्लास से ताली बजवाओ. और क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के बगल में आप बड़ा सा चार्ट पेपर लगा लो. अच्छा अप्रिशिएशन के लिए सर जितने बच्चों ने अच्छा किया है, जो क्लास में बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी उनके नेम लिस्ट आप उस पे बोर्ड पे सॉफ्ट बोर्ड पे लगाओ और बच्चों से कहो कि यदि आप चाहते हो कि आपका नाम भी वहाँ हो तो यू शुड राइट ऑल्सो. और आपको भी इस तरह से करना होगा, आपको भी इतनी अच्छी राइटिंग में लिखना होगा ताकि आपका नाम भी वहाँ पर ऐड हो जाए. तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है मैम? पहला सोल्यूशन ये हुआ कि चाइल्ड को अगर लिखता है, थोड़ा सा भी लिखता है,
तो आप क्या करोगे, उसको अप्रिशिएट करो। और सिर्फ आपके अप्रिशिएशन से नहीं होगा, अ चाइल्ड नीड्स अप्रिशिएशन फ्रॉम हिज पेयर्स और फ्रॉम हर पेयर्स। उसके पीयर लर्निंग का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चे में एक इच्छा होती है गेटिंग अप्रिशिएटेड, एंड इफ द होल क्लास इज अप्रिशिएटिंग, if the whole class is appreciating, the child will feel much more motivated. सर हम सब बड़ों में भी इच्छा होती है अप्रिशिएशन की। सर सारे बड़े लोगों में भी इच्छा होती है अप्रिशिएशन की। Each and everyone has their. Sorry to say, but this is all theory part, and the practical the same only the teacher and the child is facing. No one else can exactly understand what's the real situation is. One more child is there in my class. One child is there. He used to write only maths, not any other subject. And all the teachers are after me कि ma'am आपके class में she is not used to write. Don't want to write in exam also. He got 60 out of 80 in maths. In other subject he got 1, 2, 4, 5. Just this type of marks. Now, one thing is there. I would like to know, आपने उस बच्चे से बात की, एवरीडे बात पूछा उससे कि तुम लिखना क्यों नहीं चाहते? दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि मैथ में उसको ज़्यादा समझ आता हो, मैथ में अच्छा मार्क्स आता है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, गुड। उसके बाद उसके नाम से मैथ में ताली भी बजती होगी क्लास में, खुद आकर के बनाता है, एवरीबडी अप्रिशिएट, ठीक है? हाँ? ना दूसरे सब्जेक्ट्स में वो नहीं करना चाहता है, व्हाट इज द रीजन? डिड यू आस्क हिम? No. देखिए मैम, दिस इज नथिंग, नो स्ट्रैटेजी इज, एक स्ट्रैटेजी फेल होगी, दूसरी स्ट्रैटेजी शुरू होगी, लेकिन बच्चा नहीं लिखेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम द चाइल्ड इज फेसिंग इन राइटिंग। क्या कर आपने कभी बात किया उससे? मैंने उसको उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या? हाँ? बोलता कम है, घर में ज्यादा बोलता है। फादर्स पेरेंट्स से बात किया? काउंसलिंग के लिए भेजा है कभी उसको? काउंसलिंग के लिए भेजिए। माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम माइट बी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए डर होता होगा कि मैथ में हम अच्छा कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज देयर कि मैथ में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में नहीं करेंगे तो मुझे खराब लगेगा, या मेरे नाम से तालियां नहीं बजेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरे टीचर्स मुझे स्कोल्ड करेंगे, या मुझे खुद बुरा लगेगा। वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, मैं आ रहा हूँ, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि फेल करने की जो इनसिक्योरिटी है, खराब करने की जो इनसिक्योरिटी है, इट माइट बी प्रिवेंटिंग हिम टू राइट। एक बार ट्राई कीजिए और आप अपने काउंसलर से बात कीजिए। काउंसलर विल टॉक टू द पेरेंट्स, है ना? सबसे बड़ा क्या होता है कि हम लोग हमारे घर में हम लोग आप नहीं करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन। इन आवर स्कूल भी नेवर डिस्क्रिमिनेट कि तुम अच्छे हो, वो 90% ला रहा है, तुम 80% ला रहे हो। वी नेवर डू, वी एक्सेप्ट चाइल्ड एज ही और शी इज। घर वाले करते हैं। तुम्हारा भाई अच्छा है, हाँ तुम्हारा भाई अच्छा है, तुम्हारा कजन ज्यादा नंबर ला रहा है, वो 88 हो गया, वो मेडिकल में चला गया, वो IAS हो गया, तुम कुछ नहीं करोगे, मूंगफली बेचोगे, दिस दैट सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो might be one of the reasons, might be the force or the pressure he might have experienced at the home. Our parents. So one more thing, Yes. maths is
more about concept. Maybe his concept is clear, that is why he is doing well in maths. Well, yes. For other subject he has to learn and memorize. Memorize की बात अब हटा दीजिए मैम. और memorize should be the thing of past. Yes, understand. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टीचर के साथ बच्चे की बॉन्डिंग नहीं है. Yes. ये बहुत important. This is very important word. This is very important word. मैम बहुत important word. The teacher, the guy is missing a bond between the teacher and the students. तो वो उनसे ही घबराता है, तो फिर वो सब्जेक्ट की तरफ उसका ध्यान वो इग्नोर करते हैं. There may be different reasons behind that. अगर कोई child की learning नहीं हो रही है, कुछ learning difficulties है, तो आप simply child के साथ में पहले analysis करके देखो, उससे बात करके देखो. अगर home front में problem है, तो आप उसके home front में बात करो. Yes. I would like to share my own experience. Yes. Like standard 1 student, like they are not writing, like they don't want to write. What I do, that when they start writing, a little also he has written, so I congratulate him first. Wow, today he has written, and I make him the monitor of the day. Very good, very good. Okay? Like Yes. you are today the monitor of Brilliant. the day. Yeah. Today in the EVS class you will be the monitor, and if you keep writing like this, then I will make you the. Give a big hand to her. This is a very. You see that we need to innovate. Yes. Appreciation is the most important one. और आप सब लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में ना एक स्टोरी था. कितने लोगों ने पढ़े? यशपाल की कहानी. गुरदास नाम का एक लड़का है ना, असेंबली में he has never been appreciated. असेंबली में एक लड़का गिर गया है ना, लोग उठा करके ले गए, प्रिंसिपल से लेकर के सारे लोग उसके पीछे पीछे पीछे. Now he got the center stage. He was the attraction. ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ कि अब गुरदास सोचता है कि मैं उसकी जगह क्यों नहीं गिर गया, मैं उसकी जगह क्यों नहीं गिर गया. I would have been the center of attraction. ठीक है. अब जाते जाते नक्सल में स्टोरी वही है कि एक दिन जा रहा था और किसी वकील साहब ने उसको धक्का मार दिया. हॉस्पिटलाइज था, वकील साहब थे, तेज आदमी थे. उनको लगा कि पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा, दिस होगा. गए विजिट करने के लिए, फल वगैरह सारी चीजें ला करके. तो उसके अंदर जो दबी हुई कुंठा थी, वो जो he was never appreciated, वो जो नॉन अप्रिशिएटेड लड़का था, वकील साहब के पास में गया. वकील साहब जब उससे मिलने गए, फल वगैरह लेकर के, मिठाई वगैरह लेकर, कैसे फील कर रहे हो गुरदास एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उनके हाथ में अखबार था, तो वो कुछ सुन नहीं रहा था, ना मिठाई देख रहा था, ना फल देख रहा था. उसने कहा कि उस अखबार में मेरा नाम है क्या ना, उस अखबार में मेरा नाम है क्या. मतलब मैं एक्सीडेंट किया, मेरा नाम उस अखबार में होनी चाहिए थी, छपनी चाहिए थी. और वकील साहब ने, हाँ तुम्हारा नाम कल आ जाए. वकील साहब ने अपने बचने के लिए नेक्स्ट डे ये करवा दिया, अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए गुरदास ने अपने आप को एक्सीडेंट करवा दिया. Did you get my point? And so one more thing we can do, like children are very game friendly. Like if we play and teach them, they learn easily. Yes, that is the like thing. they are very fond of chalks to write on the board. Yes. So we can give fill-ups and ask the child who is not writing that if you will write in your notebook, then I allow you to write on the board also. Yes. Yes. So, okay. This is the best method. Thank you, man. Thank you so much. You deserve a chocolate from me. You just deserve a chocolate from me. Now, कितने लोगों के क्लास में, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास, कितने लोगों के क्लास में बच्चे हैं छोटे, खास करके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले, आप पढ़ा रहे हैं कुछ और वो आपकी ध्यान नहीं दे रहा, कुछ नहीं ध्यान दे रहा. What should be the strategy? Yes मैम, आपके मैं सॉल्यूशन जानना चाहता हूँ. Yes. Yes, आपके नाम थोड़ा सा नजदीक. Sir, I had a question. I was about to say the same thing which Gurjeet said. And then I wanted to add, there are some students
थोड़ा close. There are some students who are able to orally say the answer, but they are not able to write. In the exams, we give marks on writing. So that is a one difficult point for the junior section. Yes. You see that you are the master or mistress of the class. आपको देखना है कि आपके मैंने जो जूते वाले मैंने जो एक्टिविटीज करवाए उसमें ये देखना है कि we need to customize our teaching. अभी CBSE ने इंक्लूसिव एजुकेशन लाया. इंक्लूसिव एजुकेशन में फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं और उन फिजिकली चैलेंज बच्चों को हमको अपने स्कूल में इंडक्ट करने हैं और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं जैसे बैरियर फ्री एंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उनकी जो हमारी पढ़ाई भी जो उनके लिए होगी वो अलग होगी, कस्टमाइज्ड होगी. तो उसी तरीके से जिन चिल्ड्रन को लर्निंग डिफिकल्टीज है या जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं पढ़ने के ऊपर, यू नीड टू कस्टमाइज योर टीचिंग. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हम सबों के साइकिलिंग एक्सपीरियंस सबके हुए थे. कितने लोगों को साइकिल चलाने आते हैं? ऑलमोस्ट. कभी आपने ट्राई नहीं किया? वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर. गिर गए तो उसके बाद छोड़ दिया. Okay? होता क्या है कि हमारी जो अच्छा मैम एक चीज बताओ, आप जब साइकिल से गिरे थे तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस और उसके बाद क्यों नहीं ट्राई किया? गिरे क्यों थे? हाँ, डर से फिर नहीं ट्राई किया. डर था इसलिए नहीं ट्राई किया. फिर डर था, डर को भगाने की कोशिश नहीं किया? नहीं किए सर. हाँ? आप तो साइकिल चलाई हैं, चलिए आप चलाई हैं. जल जा मैम बताइए, आप गिरी भी जरूर होगी. Sir, when I learned cycling, that I did not fall. Okay, but the thing is that when I learned very nicely, I used to do triple riding. Once it happened that I fell down and I broke my hand also, like it was fractured. But then also I did not leave up. I did again, and here also, you know well that I was coming to school in scooty. I met with an accident in Delhi also. I did not fear. Then again I came to on the road, and now I'm driving car also. Now yes. You are driving your car also. Yes. You, by God's grace, everything is going on. You Yes. are driving smoothly, Yes. comfortably, and everything Yes. is going on nicely. Okay. So what happens when you fell down in triple riding? Why did you fell down? Why did I? Why did you fall down? Yeah. Why did you fall down? Overconfidence. Overconfidence. Yes. So you reflected upon that? Huh. One word is there. You reflected upon that I was overconfident, and that was the reason that I fell down. Okay? You learned from your experience? Yes, sir. Okay, sir, next. अब थोड़ा देर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. जिन लोगों ने साइकिल चलाया, जिन लोगों जो गिर के छोड़ दी, सबके लिए. What happened when you first decided to learn to ride the cycle? What did you do first? Next. उसके बाद क्या किया? How did the learning happen? Learning हुआ कैसे? We are going to relate it. Then, how did you know that you had mastered it? Your assessment. When did you begin to ride independently on the roads and other places? Did you improve with every ride? How can you say? Yes? Yes. Sir, first when I decided to cycle,
my elder brother said नहीं जाएगी, मेरी साइकिल को छोड़ूंगी नहीं जाओ। जो आप लड़की हो इसलिए? हाँ, लड़की हो इसलिए। पर मैं चुपके से जब वो दोपहर में सो जाते थे साइकिल निकालती थी और कोशिश करती थी, और फिर मुझे सीट पर बैठ के चलाना आया, फिर मैंने बोला देखो मैं चलाना सीख गई। Now give a big hand to ma'am. या तो आप लोग तालियां बजाना नहीं चाहते हो या उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, या सोचते हो सब अपने लिए रख लें। So next, हम लोगों ने बात किया नेक्स्ट exactly this is what we want to correlate it in whenever we are putting our students to activity, subject related activity. That is what happened, the facts. Then reflecting on the activity done. आप जितने भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि एक एक्टिविटी आपने कराया, उसके ऊपर आप एक रिफ्लेक्शन कराते हो, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया, जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझको उससे मैंने क्या सीखा, और फिर उस एक्सपीरियंस को आप यू कंसेप्चुअलाइज इनटू नॉलेज एंड स्किल्स, और फिर आप क्या करते हो कि वो जो नॉलेज और स्किल्स हैं उसको यू स्टार्ट applying and trying out on the new things. The whole learning experience cycle is all about. Only in experiences learning when we are putting, आपने यहाँ जूते वाले जो experience की activities की, now you reflect upon कि मुझे अगर दूसरे के जूते को पहन करके चलना है तो मुझे डिफिकल्टी, और रिफ्लेक्ट करके हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? वी हैव कंक्लूडेड दैट टीचिंग मस्ट बी कस्टमाइज्ड एज पर द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। 3 कैटेगरीज के लिए हमको कस्टमाइज करने होंगे, या मैम को जो इनके बच्चे लिखना नहीं चाह रहे हैं, इनको अपने पूरी टीचिंग को, मेथडोलॉजी को चेंज करना हो, कस्टमाइज करना होगा इंडिविजुअल बच्चे के। तो ये जो लर्निंग साइकिल है, रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोग रिफ्लेक्ट किए, रिफ्लेक्ट करके हम लोगों ने एक ये किया, लेसन लिया कि वी नीड टू कस्टमाइज आवर टीचिंग। ये कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ, और फाइनली अब आप क्या करोगे कि कल से अगर क्लास में जाओगे मंडे से, तो आपके जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे या जो प्रॉब्लम चाइल्ड होंगे, जिन चिल्ड्रन को लर्निंग डिफिकल्टीज होगी, उनको आप अलग तरीके से, हो सकता है आज रात में ही बैठ करके आप सोचना शुरू करो किचन में जब आप रोटी बना रहे हो कि ये जो एक बच्चा है जो प्रॉब्लम चाइल्ड है या उसका जो प्रॉब्लम लर्निंग डिफिकल्टीज है, उसको मैं कैसे कस्टमाइज। This is application. तो whole learning process में हमें इसको लेकर के बढ़ना। Yes sir. Okay. So it's a short break for the tea. I hope मुझको आप झेल ना रहे हो। चलिए, thank you. We hope everything was very much refreshing. As I told you,
Now I would like to have the teachers who are teaching science, please. एक टीचर कोई आ जाइए जो साइंस पढ़ाते हो 6, 7 में 5, 6, 7. I would like to have teachers who are teaching science. रख दो ना, आने से दे देंगे. सर मैम डरेंगे नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ. ठीक है? सुमिता मिस. आइए. आप क्या पढ़ाते हो मैम? साइंस. साइंस में आपकी सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स? बायो. बायो है. चलिए, और फिजिक्स वाले कोई टीचर हैं? आइए आइए सर. आप +2 में पढ़ाते हो? आइए. इसको कितना हाइट का स्टैंड खरीदने से अगर हम लोग वहाँ पे रख दें, मैम से बात करेंगे. ये मैग्नेट है सर. You are introducing magnet for the first time to your students. कौन से क्लास में मैग्नेट स्टार्ट करते हो आप? 6 से. चलिए. Force, हम लोग magnetic force, they learn a little bit in class 5. हाँ. But about magnet, class 6. बढ़िया से हम लोग 5 में स्टैंडर्ड 6 से पढ़ाते हैं. चलिए 6 में हम लोग मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर. आप दोनों बात. Now, what we need to understand, learning by doing, experiential learning, conceptual reflection, what happened, how happened, when happened. If we do the reverse, what would happen? Did you get my point, sir? What happened, how happened, why happened? If we reverse, what would happen? Okay? Now, what we normally do in the classroom is that first of all we teach the theory, and after that we go for the experiment. Now, what is the advantage or what are the disadvantages of it? Can anybody tell me? Yes. What are the disadvantages and what are the advantages when we are teaching theory first and then putting our students to its application? Yeah. Children will not be able to apply that theoretical knowledge into their real life. They will not be able to. Okay, one part is there. Some more explanation. Yes, sir. Mind you, sir and ma'am, we are learning the nuances of teaching. My purpose would be completely fail अगर हम लोग शेयर नहीं कर पाए कि how effectively we can teach in the classroom. Sir, if we are teaching theory first and practical later, so whenever we are teaching theory, the students are not knowing what they think is, how the thing will work, and what the thing, why we need that. Yes. But if we are showing them the practical thing first, they they see what the thing is happening. So the question comes in their mind: how the things is happening, why the things is happening, and what we are going to do. So then, whenever we will be doing theory, they will ask the questions. So I think that practically doing first is the best way to put the learning experience happen, put the conceptualization happen. Give a big hand to sir. तो अब चाय पी लिया हो भाई, आज के बाद भी आप लोग की ताली नहीं बजती है तो बड़ा बुरा है. मैम थोड़ा ताली बजाइए तो आप. होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिकली अभी करेंगे
Students are not knowing what exactly is going on. The curiosity part is always alive. Curiosity part is always alive. Students will be more focused upon. They will be learning and focusing upon all the smaller details. They will be listening to you more attentively. And the experiences they will have, that will give them the concept, that is the conceptual reflection. जब आप reflection कराओगे, what happened, why happened, how happened, what would happen if the reverse is made, and what is the learning outcome. तो ये जो सारा process जो हम लोगों ने डिजाइन करके हम लोग क्लास में जाते हैं, if we are putting our students to that particular experience, learning का जो horizon है, it is more a bigger horizon. Everybody is interested in that. Sir, please. ये दो मैग्नेट्स हैं. हम सब लोग अभी सर के स्टूडेंट हैं of standard 6. We are going to learn magnet for the first time. And sir will help us to learn what happens, why happens, how happens, what would happen if the reverse is made, and finally its application. What will be the application of magnet in different perspective? Sure? Yes, ma'am. When we are introducing magnet in the class, the first thing we say that many things around us are magnetic substances. हम लोग आपके स्टूडेंट हैं. Okay. Children. Okay, children. Are you all ready? We are going to study magnet today. No, you. Are we ready? Yes. Never you. We are all ready? So when we are introducing magnet, this is what I am having in my hand is a magnet. The first thing, there are many substances around us. Some are magnetic substances, some are non-magnetic substances. Now what are magnetic substances? The substances which are attracted by a magnet. How will you know that you have a magnet in your hand? So first you will try with the things which are around you. The things that are attracted by the magnet are magnetic substances. So first thing is that attraction of a magnet. The first property of the magnet is attraction. It attracts some of the substances, not all, and they are the magnetic substances. And there are three magnetic substances. They are made up of either iron or cobalt or nickel. So there are three magnetic substances. Now let us try with your, how many of you are having a pencil box which is having a magnetic closure? How many of you are having a pencil box with a magnetic closure? Parts we are having. Parts you are having, so that is having a metal part, maybe the chain part. Try the magnet, try whether it is attracted by the magnet or not. If you are having a zip closure, the metal part. If it is attracting means either it is made up of iron or nickel or cobalt. Now that is the first thing, attraction property. And directive property, when a magnet is suspended freely. Okay, whenever you... Sir, ma'am, don't take it otherwise. We are here learning. No, sir, absolutely not. अब मैम ने जैसे शुरू किया, आप उसके ऊपर एक इम्प्रूव्ड तरीके से इंट्रोड्यूस करो. Another example, sir. हम सब लोग सीख रहे हैं. Don't take it to your No, sir. हम लोग ये नहीं कर रहे हैं. आपने बहुत अच्छे से शुरू किया. The way, अब अगर इससे कुछ इम्प्रूव्ड हो सकता है इंट्रोडक्शन, तो हमको बताइए. Okay, you might have studied that in India we have northern state, southern state, eastern state and western state. Now if I ask you, name some northern state of India. Any example of northern state of India? Jammu and Kashmir. Then how we get the direction of north? As no.
Yes. Yes. Compass. How you will come to know that this particular direction is not direction? In reference with the magnet, it is something else. Otherwise, in map, we study at the top it is north, and bottom it is south and east. Right is east, left is west. But in reference with the magnet, it is something different. The pole of the magnet, that one is north and another one is south. So if one, so that's why I said in reference with the magnet, it's something. Then we have naturally occurring magnet, that is lodestone and magnetite. These are naturally occurring magnet, and it has a property to align along north-south direction. So if you have a bar magnet, if you have a bar magnet and suspend it freely, then you will get the direction of the north, and it will attract towards the magnetic south pole. So Earth is also a magnet, and the Earth, its south pole is aligned with the north pole of the Earth. So when you align the magnet freely suspended, then the direction in which the north pole of the magnet, it will indicate the north pole, and it will be directed along the magnetic south pole of the Earth. So that when all the magnets have the two poles, that is north pole and south pole. So direction in which this north pole, it is when I am aligning, this north pole is aligning towards this direction. So that direction we will get that it is the north direction. So earlier when the person going in the ship, they have to see the direction, in which direction we have to travel, then they use the magnet to get the north direction, and with that they come to know all the four directions in which they have to travel. So this magnet have certain property. So this magnet, the first property, the ma'am will explain about the magnetic substance and non-magnetic substance. That she had already. That is the attractive property, and this one is the directive property. The Earth itself behaves like a big magnet. So as we have the north and south pole of the Earth, similarly we have two poles in the magnet also. And as I said, when freely suspended, the north pole of the magnet always aligned with the north pole of the Earth, and the south pole towards the south. Automatically we come to know the other direction also. And the compass is also used, is having magnet, which is used for locating the directions. Magnetic compass. 4 में EVS कौन पढ़ा? हेलो हाँ 4 में EVS कौन पढ़ा? अच्छा मैंने ये बात आपको सर का और मैम का स्कॉलरी था, थोड़ा ऊंचा था लेवल। ये 4 का स्टूडेंट है, ये ऊपर है। आपको 4 के स्टूडेंट को मैग्नेट पढ़ाना, आप पढ़ाइए। आप 4 में मैग्नेट ना हो, बस यही चीज तो समझाना है उनको, यही समझाना है। 4 में जो चीजें उनके कोर्स में नहीं है, क्या लिखा हुआ है कि हम उसको नहीं समझाएंगे? लिखा हुआ यस यस नहीं, मुझे देखिए, हर क्लास का एक अपना लेवल होता है। मैं कितना जानता हूँ इट इज मटीरियल, मैं उस क्लास के लेवल तक आ रहा हूँ या नहीं, मेरी बातें हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है या नहीं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे डिग्री से क्या मतलब है उसको, ठीक है? यस मुझे 4 क्लास के स्टूडेंट को मैग्नेट पढ़ाना, एकदम उसी तरीके से कम्युनिकेटिव वे में, कम्युनिकेटिव में। सर और मैम का इट वाज ब्रिलियंट, आई गिव अ बिग हैंड। So dear students, today we are going to see something new. Okay, let's see. 1 minute मैम, मैम दिस इज योर्स। Thank you so much. सर कहाँ है सर? दिस इज योर्स। I'm having You two got it things or in not? my both the hands. Got it. चलिए मैम, मैं आपको हेल्प करता हूँ। She said she don't.
Am I audible? Am I audible, children? Okay. Please come in the center. So, I'm having 2 pieces of iron. Okay, 2 pieces of iron. Let's see what they are doing. Are they attracted or not? Let's see the magnetic thing. So I'll take this to the window sill or anywhere where it is being attracted. Yes, you have something? Yes. Oh, no reaction. Here? No reaction. Oh, it's active. Oh. Coming close. Yes, yes. Okay, something happening. Oh, let's see somewhere else. She's having one. Having something? Okay, let's see. Let's try. Okay, no reaction. Oh, no reaction. No reaction. Oh, getting attracted. Okay. 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 What else? See this pin. 7 pins. Yes. Oh my God. So many examples. बहुत ज़्यादा है. No, छोटा सा. Oh, no reaction. Oh, what happened? See. Strange, na? Not here. Okay. Something different. Both were the irons. But this one is attracting something and this is not. Why? That means this both are not iron. This one is different from this simple one. So what is this, children? This is magnet. This is magnet. You all play with it. Play. You all are having that magnet, different shape, size, and you play with the magnet. So today we will discuss about this magnet and its property. How does it behave, and what are the internal things that make it different from this simple iron? This is the iron, this is the iron, but having different qualities, different properties. What the things are different and what the things make it magnet and behave differently, this we'll discuss today. And then we'll proceed like what are the internal qualities that make it different from the magnet. Now, 6 men. Ma'am, you have explained. Yeah, give a big hand to make this minute. Ma'am, please wait. Is it just for you? Brilliant. Yes, ma'am. Now, क्लास 6 में आपने पढ़ा दिया, थियरी बताई दी, सारी चीजें. थियरी क्या मतलब आपने एक्सप्लेन कर दिया. एक्सप्लेन करने के बाद what happened? Everybody reflected. What happened? What happened? बार मैग्नेट जो है वो किसी भी लोहे की चीज को अट्रैक्ट करता है. ठीक. उसके बाद एक चीज जो आपको बताने हैं, रिपल्सन. हाँ, अब आप रिपल्सन बता देंगे. उसके बाद क्या करेंगे कि आप इसकी एप्लीकेशन करने के लिए देंगे. व्हाट विल बी द सर, आप साइंस में पढ़ाते हो 8th क्लास में, 9th क्लास में बार मैग्नेट का एप्लीकेशन. आप क्या कहते हो कि एक मैरिनर कंपास बना लो. एक प्रोजेक्ट देते हैं मैरिनर कंपास का, इट इज एन एप्लीकेशन. ठीक है. 9 में और 10 में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. ठीक है. आप उसको ये कर ले, उसकी सारी चीजें बता दो. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जो है वो ये एक्ट करता है, मैग्नेटिक कंपास कैसे बना और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गया. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, कि सबसे पहले हमने उनको बता दिया थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन. पीपल आर अट्रैक्टेड बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग न्यू. आपका बैक बेंचर भी वहां पर देखेगा, दे आर एवरीबॉडी इज लर्निंग. उसके बाद उनके हो रहा है, आप कहते हैं कि अप्लाई करके देखो. आप बताया कि मैरिनर कंपास बनाओ. Everybody is knowing you have given the concept through your demonstration. So the best method of teaching in the classroom is that first of all give demonstration, give the experience you're learning, let them understand.
and let them reflect over जो हम लोगों ने इसके पहले बात किया था सर, ये रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी डन। उसके बाद क्या होगा, कंसेप्चुअलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी कि व्हाट हैपन, जो इसका जो हमको जो कंसेप्ट आया वो क्या कंसेप्ट आया कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या आया, नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर एक साथ में रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम पोल जो होगा वो रिपल्सन होगा। ये चीजें एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन होगा हमारा कि हम नया मैरिनर कंपास बना सकते हैं। 12th तक आते आते देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट सर्किट वगैरह, जहाँ कहीं भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग साइंस के हो जान सकते हैं। Even making of magnet. Yes. Single touch method. Yeah. We can even make a magnet. तो this is what we need to do in 21st century classroom. आप सोचेंगे, you are the best. आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो. This is why you have been selected over here. This is why you are teaching such a good and big school. आपके पास थिंकिंग कैपेसिटी है, आपके पास सोचने की कैपेसिटी है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आप हर, और मैंने एक बात कहा कि मैं फिर दोहराता हूँ कि वो जूता वाला जो है हमेशा याद रखिएगा क्लास जब भी जाइएगा, ठीक है। यू नीड टू कस्टमाइज योर टीचिंग। हो सकता है कि आपके कुछ बच्चे चीज़ों को ना समझें, दोबारा समझा दें, आसान तरीके से समझा दें। सर की जो मेथडोलॉजी थी वो अपर क्लास की मेथडोलॉजी थी, मैम की जो मेथडोलॉजी थी वो इनके लेवल की मेथडोलॉजी थी, और मैम की जो मेथडोलॉजी थी वो 4th क्लास के लिए की थी। नाउ द अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑलवेज चेंजेस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, थैंक यू। Now, 21st century skills में 4 C's होते हैं। पहला C है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अभी, जो what happens, why happens, how happens, if it will be reversed, what would happen। आप मोटरसाइकिल पढ़ाते हो, आप क्लास में मोटरसाइकिल पढ़ा रहे हो, इवैपोरेशन पढ़ा रहे हो, उसको क्लास में एक्सपेरिमेंट करके पूरे मोटरसाइकिल को तो समझा सकते हो। रिवर्स होने से क्या होगा, इसको समझा सकते हो। और अब एक चीज बताइए कि भले आपके जो टाइमिंग है वो टाइमिंग 4 क्लास में आपको खत्म करने हैं या 6 क्लास में खत्म करने हैं, 8 क्लास लगेंगे आपको, 1-2 क्लास एक्टिविटीज में लगेंगे, तो क्या आपके प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेंगे? अलाउ करेंगे। और फिर ये जो मैम, अभी हम लोग चाय पीते पीते यही बात कर रहे थे, ये नहीं पढ़ता है, हम क्या करें, ये पढ़ता ही नहीं है, तो ये जो कहानी है पढ़ता ही नहीं है वो खत्म हो जाए, बिकॉज एवरीबडी विल। और जो बच्चा नहीं कर रहा, जिसे मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास आपने बनाने, मैग्नेटिक कंपास आपने बनाने के लिए, तो आप उसको कोलैबोरेटिव वे में बनाइए ना, सबको बोलिए सामान लेकर के आओ। और जो बच्चा नहीं या कम बना रहा है, नहीं ज्यादा समझ रहा है, उसको इन्वॉल्व कीजिए, हेल्प द चाइल्ड में। अब एक चीज मुझे बताइए कि हम लोग जब पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस करते हैं, वो कैसे आप करते हैं? आप क्वेश्चन किससे पूछते हैं? आपने चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ा दिया, क्वेश्चंस, हाउ, व्हाट इज द आर्ट ऑफ थ्रोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? हाथ उठनी चाहिए सर, आप लोग, यू पीपल आर लर्नड इनफ। चलो एलियट बताओ। यस मधु मिश्रा मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? No, Mosmi ma'am. I hope you recall me.
Okay, please come. First, we will, after giving the concept of any topic, then we start with the basic, the meaning, and then we move over towards the certain applications of that particular topic. नहीं वो तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तुम अपने क्लास में क्वेश्चंस बच्चे से कैसे क्या बोलोगे? सपोज करोगे I engage the students in asking question answers among themselves. चलिए ये एक तरीका हो गया। नहीं आपने मैं पूछ रहा हूँ आर्ट ऑफ थ्रोइंग क्वेश्चंस है नहीं? आपके यहाँ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। हाँ Ask the question from the smart child, so he will give the answer, or other will revise it. Yes. उसके बाद क्या होगा? पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किसे कहा? जो basic data fact from the fact and then the level of the question to be. आपने जो भी उसके लेवल में आपने बना दिया। हमारा ये कहना है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, अमूमन हम लोग क्या करते हैं? कि जो बढ़िया बच्चा है उससे पूछ लिया, ताली बज गई, हो गया। Then others will also start asking. सबसे पहले किससे पूछते हैं? Good child. ओवरऑल क्लास। ओके ठीक है, सब लोगों ने उठा दिया। Excuse me, sir. Yes. First, we will throw the question overall to the class. Yes, मैम, मैं तो आपके पढ़ाई का कायल हूँ, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स जो हैं आज भी कहते हैं कि मौसमी मैम ने जो पढ़ा दिया मुझे आज तक याद है। Your students are still saying that. Thank you. Yes, ma'am. Sir, when I teach a topic, after teaching my topic, just to recap the topic, and after recapping my topic, then I throw the question in whole students, not like that the smart student or slow learner students, nothing as such. I throw the question, maybe slow learner also answer first, it may happen. So then after that, who is answering? If he answered better or best, it's fine. And after that, if anybody is not able to answer, if anybody is telling something wrong like that or some doubtful, then again I recap the topic, then I understood that I'm not getting the feedback from sent person student. So again I recap the topic, and again then I throw the questions to all of them, and then I must get the answer sent person. Okay, Thank you. Thank you. Brilliant, ma'am. Brilliant. होता क्या है कि अमूमन हमारी आदत होती है कि बढ़िया से पढ़ाया, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है यस उससे ये अमूमन यही होता। हम लोग अच्छे स्टूडेंट से आप इंटायर क्लास से पूछते हो। अब एक चीज बताओ कि जो बच्चा नहीं समझा वो ऐसे छिप के बैठा रहता है, आप उसी से पूछते हो? यस सर, उससे भी पूछती हूँ सर। उसी से पूछते हो? पहले उससे पूछती हूँ सर। पहले क्योंकि हमें पता ना है माँ के पहले हम उसी से पूछेंगे। जो बच्चा छिप रहा है हाँ जी सर, मुझे उसी से पूछेंगे। हाँ वो आंसर नहीं कर पाएगा, and he should know the answer. That is why I ask question. तो मैम he should know the answer. Yes sir. Don't you think that the child will feel demoralized? No sir. No ma'am. Confidence, lack of confidence होता है सर, तो he Lack should of speak when. मैम अगर वो छिप रहा है इसका मतलब जो है he is hesitating. Yes sir. Number 1. Maybe 50% आंसर जानता हो, 50% नहीं जानता हो। उसके एक जो बैक बेंचर्स होते हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ रोटेशन होता है, रोटेशन सबके यहाँ होता है। तो बैक बेंचर वाली क्योंकि आई एम टेलिंग यू अबाउट द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, एंड अच्छा बच्चा तो हर जगह पढ़ लेता है, मीडियोकर बच्चा भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, जो बिलो एवरेज है हमको उस पर ज़्यादा ध्यान। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सबसे पहले उसी से पूछेंगे क्वेश्चन और वो जवाब नहीं दे पाया तो ही विल फील डिमोरलाइज्ड। नहीं, एक्चुअली मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ सर, तो मैं रॉन्ग आंसर्स बताती हूँ बच्चों को, और मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों ने क्या लर्न किया। लेकिन जब सबसे पहला असेसमेंट होता है
वो रॉन्ग आंसर जब आप जो है क्लास को इन्वॉल्व करते हैं तब। हाँ जी सर, तो मैं पूछती हूँ कि आपने लर्न किया, मैंने क्या पढ़ाया, आपने समझा उस चीज़ को। तो जब वो बच्चा रॉन्ग आंसर करता है, बिकॉज कुछ ना कुछ वो बोलता है, इधर राइट और रॉन्ग, वो कुछ ना कुछ बोलता है। फिर मैं दूसरे बच्चों से पूछती हूँ कि अच्छा इसने जो बोला वो सही था, तो फिर बच्चे बताते हैं, फिर मैं उनको सुनाती हूँ नहीं बच्चे आपने जो बोला वो सही है, लेकिन ये आंसर ऐसे होगा। तो वो डिमोरलाइज नहीं होता है सर, तो उसकी हैबिट हो जाती है कि नहीं मैं भी बोलूँगा, मिस ने अप्रिशिएट किया, मैंने गलत बोला तब भी मिस ने अप्रिशिएट किया। ओके मैम, थैंक यू सो मच, गुड आंसर। मैं थोड़ा सा उसमें अगर आप मेरे साथ मेरे ओपिनियन से अगर एग्री करते हैं तो आई थिंक ये दिस इज अ टेस्टेड दिस इज द टेस्टेड वन। होता क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले जो अच्छा बच्चा होता है उससे पूछिए, उसके बाद सेम क्वेश्चन को मीडियोकर बच्चे से पूछिए, बिलो एवरेज वाले बच्चे को हम तीसरे पहला फर्स्ट जो बच्चा है ब्रिलियंट बच्चा है उसने एक बार मीडियोकर ने एक बार आंसर, मीडियोकर ने उसको सुना और उसके मन में जो भी शंका थी सेम चीज को उसने आंसर किया। और जो बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके 2 बार सुने और तीसरी बार जो उनके मन में हेजिटेशन था या जो बातें आधी नॉलेज थी उन्होंने 2 बार सुन के पूरा नॉलेज किया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो and he or she is able to answer. This is the art of throwing questions. अब क्या होगा कि जैसे ही बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स ने आपको जवाब दिया पूरे क्लास से ताली बजवाइए, गिव अ बिग हैंड। होगा क्या कि द चाइल्ड विल फील मोटिवेटेड, उसको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूं। ये जरूरी है करना। और हमने क्या कहा कि हमारी पूरी एफर्ट, हमारी पूरी एनर्जी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं जो बिलो एवरेज वाले हैं हम उनको मेन स्ट्रीम में लेकर जाए। तो दिस इज द आर्ट ऑफ थ्रोइंग क्वेश्चंस। और याद रखें कि जो बच्चा लर्निंग डिफिकल्टीज है, नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, स्लो लर्नर है, आप उसको मोटिवेट करके इसी तरीके से 2 बार आंसर किया, तीसरी बार वो आंसर करेगा और वो अगर थोड़ा बहुत भी आंसर किया, सपोर्ट द चाइल्ड और जब वो करता है तो पूरे क्लास से ताली बजवाइए उसके लिए। सारे लोग जो हैं, सारे लोग बच्चा हमेशा अब जो छिपने की कोशिश नहीं करेगा, आप करके देखिए। इट इज माय टेस्टेड एक्सपीरियंस। You are doing yes. Yes, ma'am. Sir, some children, they are introvert. Yes. We know when we teach a class, we understand some children are introvert. Knowingly also they are not able to answer or they do not want to answer. In front of everyone they hesitate. So in that case, we have to give opportunity several times to that introvert child to make him or her extrovert. Yes. Then automatically he will get that habit to answer. Yes. Yes, this is you see that we need to introvert बच्चे को बोलवाना हमारा काम है। We need to put them to communication. अगर communication हम नहीं करेंगे, स्कूल नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी कॉलेज में तो कोई इसको देखने वाला नहीं है। So it is our duty to do that. उसके बाद जो चीजें क्लासरूम में आपके यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, तो we need to do that like that. तो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग में, you must put your students to open minded. जो चीजें हैं he or she must be receptive. कभी आप लोगों के क्लास में कभी ऐसा हुआ, एक थियरी है थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की, उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जब आपके क्लास में आता है, he has got certain prior knowledge. अगर आपकी जो पढ़ाई है, if it is constructing upon the previous knowledge, he will accept you.
If it is not constructing upon, he or she will dissent. किसी के क्लास में हुआ ऐसा? किसी ने ऐसा नहीं ऐसा होगा? Yes, it has happened in my class. How did you handle? Actually, sir, the child was a new student in our school, and the concept that was given to him in the previous school by the previous teacher, that was actually wrong. And as you said that we as teachers, it is our responsibility to give the correct information to the child. So I had to use even Google and YouTube to actually prove my point that the previous knowledge which he got from his previous teacher was not correct and up to the mark. So you told that your teacher was wrong. Did you tell the child that your teacher was wrong in giving you this concept? No, not exactly. I did not say that teacher was wrong. I just said that the concept that you have taken or you have developed is wrong. Because as teachers, it is our responsibility that we should not put down our fellow teachers, even if they commit some mistake. Okay, sir. Okay. Sir, मैथ जब पढ़ाते हो, मैथ के टीचर कौन है सर? 60%, 70% स्टूडेंट्स आपके होमवर्क करते होंगे, 30% नहीं करते होंगे, ऐसा है? Yes, sir. Yes, always. Yes. ये सब स्कूलों में. Homework actually, sir. स्कूल में सारे स्कूल, yes sir. In higher classes, only 20 to 30% students do the homeworks, and rest 80% they don't do. क्यों? Because they are actually indulged in other different kinds of subjects. Like if I am giving homework in mathematics, they are telling that actually sir I have to do the homework of my coachings. They are doing the homework of chemistry, or they are doing the homework of other activities. They are getting the project or other things they are doing. So they are always making the excuses. They are not doing actually. But if I am asking them, if you have not done the homework, can you do the same question here on the board? Then that time many of them come and solve the question on the board. So it is also not necessary that whether they have completed the homework or not, because homework can be completed by taking the help of other students. That is the point, sir. Copy कर लेता है. Yes, sir. Yes, copy कर लेता है. तो आप छोड़ देते हैं? No, sir. होमवर्क अगर सीनियर क्लास में अगर बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, तो you can only say them that you have to do. If you have not done, do in the class here. Okay. That can be done, but you can't pressurize them in the senior class. जो बच्चा नहीं समझा इसलिए होमवर्क नहीं किया, सब होता है. Yes, that can be. That kinds of students come to me, sir, I have actually not understood. No problem, just sit in front of me, I will solve and I will show you again. Sir, you people, खास करके मैथ वाले जो टीचर्स हैं, they are the best person in this world. क्योंकि इसीलिए कि maths is mostly the most graded subjects. कितने लोगों को लगता है? मुझे लगता है. Most graded subject. मैं जब पढ़ रहा था, मैं बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ता था, गांव वाले स्कूल में. गांव के बाद शहर आया, शहर के स्कूल में, बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल. मेरे फादर ने एक टीचर रख दिया था, और क्या था कि मेरे टीचर को 4 बजे आना था, और 4 बजे मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था. मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, मैंने यूनिवर्सिटी खेली क्रिकेट में. तो हमारे सारे मित्र जो है घूमते रहते थे, और मेरा टीचर पढ़ाते रहता था, और मेरे घर के ठीक सामने घर था, घर के ठीक सामने रोड होते थे. मैं सामने में घड़ी देखता था कि टीचर और मेरे दोस्त घूमते रहते थे, क्योंकि मेरे बिना खेल नहीं हो रहा था. टीचर ने होमवर्क दिया, बताया, समझ गया? यस सर, समझ गया. घड़ी देखा कि 5 बजा, टीचर गए. उसके बाद फिर मेरे खेलने का समय, 4 बजे से मेरे दोस्त घूमे. सर आप तो होमवर्क नहीं किए होंगे सर?
हम इसलिए नहीं करते थे कि मेरा ध्यान उसके ऊपर था ही नहीं। हमारे टीचर को 4 बजे ही आना था, मेरे फादर को 4 बजे ही टीचर को बुलाना था, और वो मेरे खेलने का समय था। I did not have any interest in learning mathematics। और पूरी जिंदगी वो जो लेसन था सर, नेक्स्ट डे बड़ी मार पड़ती थी, थप्पड़ से थप्पड़ होता था। फादर आते थे, फादर डांटते थे, मारते तो नहीं थे मेरे फादर, लेकिन डांटते थे, और मेरे टीचर तो लगाते थे जबरदस्ती। लेकिन वो जो लगाना था, आज तक जो है उसकी तकलीफ में झेलता हूँ सर, और आज तक मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है। यस यस, फोबिया, एकदम फोबिया सर। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो अभी ना बंद हुआ, उस समय तो सब लोग मारते थे, दादाजी से लेकर के सब लोग मारते थे, और कहते थे कि जितना बंदा पिटेगा उतना ज्यादा समझेगा। हाँ, वो मैंडेटरी था, आपने भी देखा होगा, इट वाज मैंडेटरी, स्ट्रांग होता था। होता क्या है सर कि खास करके मिड लेवल में, अगर आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं सीखते हैं मैथमेटिक्स, उनको डिफिकल्टीज होमवर्क नहीं करके आते। अगर हम 50% बच्चा आपका क्लास में सीखा और 50% नहीं सीखा, बोर्ड पर आपने लिखा, आप करके देखो, मैंने अपने स्कूल में करवाया है, एंड इट हैज प्रूव टू बी अ मिरेकल। मैं कहता हूं टीचर को लिखो, स्टेप 1 डू दिस, आप लगाओ, स्टेप 1 आप करो, उसके बाद स्टेप 2 डू दिस, स्टेप 3 डू दिस, स्टेप 4 डू दिस। आपका मीडियोकर बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा। जो ध्यान में नहीं है, अगर वो खोलेगा अपना नोटबुक को तो घर में बना लेगा। और अगर बिलो एवरेज बच्चा है तो स्टेप 1 डू दिस, रिजल्ट ये, स्टेप 2 डू दिस, रिजल्ट ये, स्टेप 3 डू दिस, रिजल्ट ये। आपका हर बच्चा करके आएगा, एक बार ट्राई करके देखो, और आपके हर बच्चे मैथमेटिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि 50% बच्चा जो क्लास में नहीं समझता है, नोटबुक में है और सारा स्टेप्स इसमें दिया हुआ है, ही विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट एट होम, और उसके लिए आसानी होगी। तब क्या होगा कि सर दूसरे से कॉपी नहीं करेगा, बैठ करके टीचर आने के पहले लाओ दिखाओ उनको होमवर्क, कॉपी करेंगे नहीं तो डांट पड़ेगी। सर नेक्स्ट, ये हम लोगों ने अभी ये कर लिया। नाउ वन पार्ट इज देयर, लर्निंग एंड इनकलकेटिंग मेटाकॉग्निशन। Metacognition means, how many of us know what is metacognition? गूगल कोई नहीं देखिएगा, गूगल नहीं देखिएगा। Metacognition क्या है? What learning, I mean knowing about our thought process. Knowing about our thought process is metacognition. हम कैसे, मेरी thought process क्या है, हम कैसे सीखते हैं। अगर ये आपका बच्चा, हम लोगों का बच्चा अगर मेटाकॉग्निशन को प्रैक्टिस करता है, समझता है कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, मेरे समझने का तरीका क्या है, और अगर आप उससे शेयर कर लेते हो तो आपके 50 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशंस जो हैं अपने बच्चों के साथ में बहुत जरूरी होता है। सर नेक्स्ट, नाउ अब सवाल आते हैं कि क्रिएटिविटी की। चलिए सर, एक आदमी को हम लोगों ने क्रिएटिविटी पर डिस्कस किया था। एक कोई आदमी आइए, यस मैम आप आ जाइए, आप आइए मैम। आपको मैं 2 मिनट का सोचने का समय देता हूं। आपको नरेंद्र मोदी पे बोलने हैं, ठीक है? आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं। आपको ये हेमंत सोरेन साहब के ऊपर बोलने हैं, ठीक है? 2 मिनट। सर गाड़ी देखिए।
Now, please observe. Sure, prepare. नरेंद्र मोदी पे 5 लाइन बोलना है आपको, हेमंत सोरेन पे 5 लाइन बोलना है। हो गया? तैयार हो आप भी तैयार हो मैम? आइए सामने आइए मैम। चलिए, अब आप हेमंत सोरेन पे बोलेंगे, आप नरेंद्र मोदी पे बोलेंगे। दिस इज इम्प्रॉम्प्टू, प्रैक्टिस इट इन द क्लास। क्या कर रहे हैं आप? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर putting our students in a new situation immediately and let them think. ठीक है मैम? चलिए, अब आप नरेंद्र मोदी पे बोलिए, आप इस पे बोलिए, कुछ भी बकिए। Hemant Soren is the Chief Minister of Jharkhand. Yeah. And he does so many things for Jharkhand, for the illiterate people, for tribal peoples. He has done so many things. For students also, he has done so many things. He is a good Chief Minister of Jharkhand. Doing well in all the areas. Yes. Leader of Jharkhand Mukti. Yes. He is the leader of Jharkhand Mukti. Now, what happened? What was going in your mind when I changed the topic? What was going in your mind when I changed the topic? Blank. Yes, you see her experience. You had already planned. The picture was totally changed. Picture was totally changed. You are put in a different frame. You were in different frame of mind. Okay, how did you cope that? How did you cope that? My question is that, how did you cope that? All of a sudden, I just came brought from Delhi to Jharkhand. Yes. From Delhi to Jharkhand, you came back. Okay. Chaliye, next. Now, immediately, what did you do? You started. Yes, I I've been thinking of the points. thinking about the points. मैम, अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि you are putting them in a different frame immediately. All of a sudden, I have to change all the. आप सारी चीजों को you are making your students psychologically prepared Prime for Minister everything. changed into Chief Minister. Yes. Our Prime Minister said Changed into Chief Minister. The sentence is totally different, changed. But you managed. Maybe you had a challenge, but immediately you managed. This is what we need to inculcate. Put your students in a different frame immediately. ये रट करके आएंगे तो कोई भी आदमी बोल लेगा, है ना? रट करके आएंगे तो कोई भी आदमी बोल लेगा, धारा प्रभाव बोल लेगा, आप ताली बजवा दोगे, सब चीज होगा, 10 में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी दे दोगे, बढ़िया मार्क्स आ जाए. बट व्हाट अबाउट थिंकिंग इन डिफरेंट फ्रेम? वहाँ पर कैसे अप्लाई करता है, वहाँ पर कैसे सिचुएशन के साथ में अडेप्ट करता है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ये चीजें जो है, यू नीड टू move your students out of his or her comfort zone. Second thing is that, yes. He is the Chief Minister. He is the Prime Minister of India, and he is a great personality, and he does many things for our country. He is a great leader. He is a great leader. Thank you, ma'am. Thank you so much. Just a minute, ma'am. This is just for you. Yes.
और किसी के ड्यू रह गए हैं क्या? एक मैम के साथ ड्यू रह गई, आपकी ड्यू रह गई? डिड आई गिव यू? ओके, यस, दिस इज जस्ट फॉर यू, दिस। ओके मैम, नेक्स्ट सर। तो व्हाट हैपेंस नाउ, एक स्टोरी जैसे 10 या 12 में आपको लिखने होते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हो ना, एलियन बताओ, नहीं तुम्हारे जो है एक स्टोरी देते हो आप, स्टोरी देते हो, स्टोरी इसलिए देते हो क्या कि आपने कहा घनी it was a dark witch night, okay, raining heavily, nobody was there, there was the sound of the screech of the owl and dot 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 dot. Now you have to create one story, you have to make one story. This is what is आपके इसमें है ना? हाँ, क्या होता है वहाँ? Why this particular question is framed by the CBSE? It helps a student to think more about helps a student to think more about the ideas. They can create another story what maybe even we may not have thought of. और एक के बाद एक like the story keeps on the plot changes. Character also, some more characters are introduced according to the everybody mind of the will student. have his or her own story. Everybody will have his or her own story, है ना? तो that is आप उसके आपको एक पिक्चर्स दिखा दो और उस पिक्चर्स में बोलोगे इंटरप्रेट करने के लिए। हर पिक्चर के इंटरप्रिटेशंस होंगे, वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, किसी के नेगेटिव होगी, किसी की पॉजिटिव होगी। उसकी सोच आपको समझ में आएगी कि उस कैंडिडेट की सोच क्या है, वह नेगेटिव फ्रेम में सोचता है या पॉजिटिव फ्रेम में सोचता है। Sometimes during this particular kind of work that we do in the class, what I have noticed in this kind of story formation, some students they try to relate it with their own life and they put themselves in that situation and then tell about the story. Yes. Sometimes like it has the tragic end, Comic end. Yes. it will be like it will be based on their experience, full of tragedy or comic tragedy will be there. So, or it can be in a form of dialogues. Yes. So means different kind of mindset and different kind of ending we will be having of the same reading line, but ending will be different and the creativity will be completely different. Thank you, ma'am. Thank you. That's a brilliant answer. Brilliant answer. Thank you. What happened that one day I just was taking a class of standard 6. टीचर नहीं आए थे, मैं चला गया था और मैंने एक स्टोरी राइटिंग, सारे बच्चों ने लिखा, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी मैंने पिक्चर दिखाया सारे बच्चों को। किसी एक बच्ची ने लिखा कि अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड। I sent the child to the counselor. मैंने अपने काउंसलर के नाम से पूछा, and what we came to know that actually she was thinking of committing suicide. Reasons? There was a fighting going on between the parents. Being a girl child, she was humiliated. There was gender bias, gender discrimination, and gender stereotype too. Gender stereotype, we understand? That there is a role defined. कि चाय आप ही को बनानी है, मैं मर्द हूँ, मैं चाय नहीं बना सकता, मैं हस्बैंड हूँ, चाय नहीं बना सकता, डिफाइंड। तो we come to know good many things when we are putting our students in impromptu or some of the creative expressions. Next, और इससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट सर, अब जो फर्स्ट सी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके क्या क्या आउटकम है। सबसे पहला होता क्या है कि द चाइल्ड इज एबल टू रीजन व्हाई, व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, हाउ हैपेंड। ये जो रीजनिंग एबिलिटी है वो चीजें होती है। द चाइल्ड इज एबल टू इवैल्यूएट, ये सही है और ये गलत है, इसमें ये चीजें अच्छी है और ये चीजें बुरी है। नेक्स्ट कि
is able to interpret information and draw conclusion. And finally, what happens that he can provide innovative solution, he can create something new. और critical thinking का ये जो part है, this is the most important part. Next sir. Creativity and innovation, हम लोग दूसरा part है overseas का. हम लोगों ने बात करा generating new ideas. अब सपोज कीजिए कि आप लोग, हो सकता है आप लोग बहुत कम लोग होंगे उस उम्र में, 90s में जब मोबाइल फोन आया था, 98 or something like that, उसमें मोबाइल फोन इतने बड़े और एक फ्रेंड की नाम नोकिया था, सिविल था. Yes. So that was creativity, that was a creative mobile phone पहली बात है. और उस समय मुझे याद है कि मेरे एक रिलेटिव के पास में थी और she came to stay at my home. तो उसके पास मैंने देखा फर्स्ट टाइम. हाँ 1 2 3 जो भी बैलेंस वगैरह, और इतना बड़ा एंटीना हुआ करता था. और इनकमिंग कॉल के पैसे लगते हैं. कोई कॉल नहीं. वो क्या था, हमारा स्टेटस सिंपल था. जैसे कैरिंग मोबाइल. जैसे एप्पल फोन में क्या होता है कि आप चाहते हो हमारे पास एप्पल फोन है, मैंने फोन को क्या किया, ऐसे उलट के सबको देखे कि मेरे पास एप्पल. तो उस समय में क्या हुआ कि there was new ideas. अब लोगों को क्या लगा, इम्प्रूव होती है. वो हटा, एंटीना हट गए, फोन बड़े से छोटे हो गए, बटन वाला फोन आ गया. उसके बाद फिर स्मार्टफोन, धीरे धीरे स्मार्टफोन डेवलप हुआ. हाँ टीवी में भी वही चीज था, एंटीना वगैरह चीजें. तो चलिए उन चीजों को हम इससे रिलेट करके जोड़ते हैं. तो जब क्रिएटिविटी होती है तो एक नया आइडिया निकलता है. कोई भी नया आइडिया हुआ, दैट इज क्रिएटिविटी. हमको इस बच्चे के अंदर, आप प्रोजेक्ट करते हो, एनुअल फंक्शन करते हो, प्रोजेक्ट बनवाते हो या साइंस एग्जीबिशन कराते हो, देयर आर मेनी न्यू थिंग्स दैट पीपल कम टू नो. हमारे बच्चे जो बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज है जिसका हम डिफरेंट एंगल से सोचते हैं. अगर जिस समय फोन बनाया होगा किसी ने, जिसने भी फोन बनाया, उस समय उसके दिमाग में होगा कि इस फोन को अगर हम अलग तरीके का फोन बना लें, बड़ा ना हो, छोटा हो, जिसको पॉकेट में लग के चले. उतना बड़ा फोन जिस समय था एंटीना वाले, उसको हम हाथ में ही लेके चलते थे. तो उसके बाद बटन फोन का बना हुआ. तो थिंकिंग इन डिफरेंट एंगल्स. नेक्स्ट, कंसीविंग समथिंग न्यू. उसके बाद क्या है कि एक नए तरीके से इजाद होना. सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, सब चीज हुआ, पूरा स्मार्टफोन हुआ. और टच पहले तो हम लोग सोचते ही नहीं था. बटन वाले फोन में तब सोचा नहीं था कि कुछ टच भी होगा, इतना छोटा सा स्क्रीन. अब क्या हुआ कि फोन बदले, फोन का पूरा शेप बदल गया, फोन के साइज बदल गए और टच स्क्रीन हो गया. और जब टच स्क्रीन आया तो फाइनली क्या हुआ कि एक कंपनी ने बनाया, पहले सीमेंस ने बनाया, नोकिया ने बनाया, उसके बाद सैमसंग आ गए और डिफरेंट अदर कंपनीज आ गए. इंडियन कंपनीज भी आई, फॉरेन के कंपनीज भी आई. तो बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज. आपको ये देखने हैं कि व्हेन यू आर इनकलकेटिंग द क्रिएटिविटी इन द क्लास, दिस एरिया मस्ट बी फोकस्ड. हम लोग जब नेक्स्ट कीजिए सर, क्रिएटिव स्किल्स को आप जब अब करेंगे तो आप सबसे पहले, अभी क्या हुआ था, हम लोगों ने जब
मैग्नेट को शुरू किया, एवरीबडी वाज क्यूरियस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक इंक्वायरी थी, बगल वाला क्या हो रहा है। ये जो इंक्विजिटिवनेस है, वी नीड टू थिंक। हमारी जो पूरी टीचिंग स्ट्रैटेजी, कितने लोग जो है सोच करके आते हो, हाथ उठाना, ठीक है लेसन प्लान है आपके, ईमानदारी से आप बताना, कितने लोग सोच के आता हो कि क्लास में कल हम ऐसे पढ़ाएंगे, क्लास में कल हम इस प्लान के साथ बैठे। लेसन प्लान तो है आपके पास, मैम ने साइन कर दिया, सबने साइन कर दिया, लेसन प्लान है आपके पास, लेकिन कल हम कैसे पढ़ाएंगे कितने लोग सोच करके आते? यस, 1 2 3 4, अब धीरे धीरे हाथ उठ रहे, बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। याद रखेंगे सर, वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर and every day our students teach us how to teach. I'm using the word every day our students teach us how to teach. हम बहुत चीज उनसे सीखते हैं। मुझे याद है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में अपने स्कूल में क्लास में करा रहा था 12 में। Some of the questions that were asked by the students, it was marvelous questions. और मुझे लगा कि आगे एज ए टीचर मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन क्यों नहीं है? That's why I told you at the beginning that it is the 360-degree learning for us. So अब आप जो है, जब आप क्रिएटिव स्किल्स को करोगे तो ये सब सारी चीजों को आप करते हैं। You can have a click of all those things. तो अब मोबाइल है तो if you are interested, you can have a click of और मेरे पास चूंकि I have to complete the lesson latest by 1, I mean complete the session latest by 1, तो हम लोग जो है थोड़ी सी तेज पढ़ेंगे। ये जो देखिए, ये इंक्वायर, ऑब्जर्व, रिसर्च, ये जब आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ये वर्ड यूज करेंगे, किसी की क्यूरियोसिटी को, ओपन माइंडेडनेस को, इमेजिनेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ये सब वर्ड यूज करके आप इस एरिया को आइडेंटिफाई करवा करके सॉल्यूशन में ला सकते हैं। सर नेक्स्ट, चलिए, ये वो फिगर है, ये फिगर है how we are going to interpret. 3 फिगर हैं। Volunteer, I would like to have the volunteer. I would like to have the volunteer. आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? You see that there are 2 types of questions. एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब हम थ्रो करते हैं तो यही होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, दिस इज ओपन एंडेड आंसर। आप कुछ भी बोलोगे सारे आंसर सही। और याद रखेंगे कि अब वो समय आने वाला है, सीबीएसई जो किताबों को जिस तरीके से रिवाइज कर रही है उसमें बहुत सारे ओपन एंडेड आंसर होंगे and no answer will be wrong. Each and every answer will be correct. तो उसी की एक प्रैक्टिस हम लोग कर लें यहाँ पे। Yes. Sir, in my opinion, there is a teacher who's teaching and there are 2 students. One who's just writing whatever the teacher is saying, and the other one, she is able to understand, and she's when the teacher is asking the question, she is raising her hand and ready to answer. और दूसरा ये तो फर्स्ट ये हुआ, दिस इज फर्स्ट
आंसर। कई इसके कई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो गए। उनके लिए ये पेंसिल और पेंसिल से निकले हुए पौधे जो हैं, प्लांट दैट इज स्प्राउटेड, इट इज डिफरेंट। वो स्टूडेंट हैं। सर थोड़ा लाउडली बोलेंगे। Here the child who is raising the hand may be due to the tiredness. And after writing, got tired and very tired and feeling very sleepy. Head is towards leaning at one of the side. सर आपके क्लास में बच्चे सोते हैं क्या? Yes, there is one child. There is one child. Why? That child is a special child. He's in my class and there he is seeking. Yes, Lavanya. And all are knowing about. Yes, some more interpretation. मैम आपने अभी तक कुछ नहीं। बस आपको ये 3 पिक्चर हैं। एक जो हाथ उठा करके किताब खोले हुए, अब कौन है? स्टूडेंट है, टीचर है, लीडर है, कौन? ये दूसरी एक है हाथ उठाए हुए, तीसरा एक पेंसिल है, उसमें स्प्राउट किया है, मतलब ये जो जर्मिनेटेड प्लांट foliage. Yeah. The one with the book in the hand is the teacher. Teacher. The one raising the hand is the student. The child who has raised her hand, she's asking a question. So, मे भी उसको पेंसिल बहुत अच्छी लगी हो और वो उसके लेने के लिए हाथ उठाया हो। पेंसिल बहुत अच्छी लगती है और देने के लिए Sir, if I take peer teaching, so if I consider that a girl holding the book in her hand, she is teaching some about the pencil, and the girl sitting, and she is saying, you know, you are teaching wrong. Let me go and teach some about the pencil. One more idea. Yes. So I think that pencil is the medium between teacher and the student. You are philosophical right now. Yes. Yes, ma'am. Thank you, sir. So in my mind, actually the picture says a teacher is who help the child to grow, and this germinated plant is growing. So that's why. सर कहा भी जाता है कि पत्थर में धो होगा है, तो यहाँ टीचर की क्षमता दिख रही है कि टीचर अगर चाहे तो जान डाल सकता है। ताली बजा दीजिए भाई हम टीचरों के लिए। What happened? Each one had his or her own story, and no story is wrong. So mind you, when you are posing a question which is open-ended question, close-ended question, it means that yes or no. Answer will be in yes or no. Okay? FITV and etc. etc. और जब
ओपन एंडेड अब ध्यान में रखेंगे कि आपके पास में अभी 11-12 में 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 10 वाले टीचर्स कौन हैं, कितने परसेंट हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड? सब 10 में हैं। कितने हैं सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? अभी कितने होंगे आपके? 50%। यस, और जब 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वी नीड टू रिवाइज आवर टीचिंग स्ट्रैटेजी। सर नेक्स्ट। क्रिएटिविटी के लिए हम लोग को क्या करना? इमेज स्टॉक कर लो। अब हाथ में दे देते हैं आपको माइक्रोफोन और आप इसको बोलिए मैं एक माइक्रोफोन हूँ। चलिए यस, I am a microphone. यस, और क्या? सिर्फ माइक्रोफोन है तो और क्या? By this speaking in this, all of the people over here, they will. I make the voice louder. Voice louder, and everyone will be able to listen the voice clearly. Yes. और I am run by electricity. Yes. और and without me no leader can speak rubbish. Without me no leader can speak rubbish. Yeah, I am modified also. I am wireless. Yeah. Thank you, ma'am. So what happens that these are the things. Please click. You can use in your class. अब मुझे लगता है कि आप लोग चाह रहे हो कि ये बंदा कितनी जल्दी हम लोगों को छुटकारा देते। मैं 1 बजे सबको छोड़ दूँ, प्रॉमिस। और अभी जो मैम ने कहा था, wrong is right, that this is what is all about. आप अपने क्लास को कितना इन्वॉल्व करते हो, कितना क्रिएटिव बनाते हो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर नेक्स्ट। अच्छा एक चीज बताइए सर, मैं किसी दिन क्लास में आप लोग थक के होते हैं, आपको मन नहीं करता है, and the moment you occupy the chair, the authorities will come. अभी वाइस प्रिंसिपल मैम बैठी हुई है, she will be, hello, what is happening? You are not supposed to do that, you are not supposed to sit. And that day you are feeling very low, you just don't want to teach. Today. क्या करेंगे उस समय? आपको प्रिंसिपल के तरफ से पैड भी मिले, ताली भी बजे आपके नाम से, क्या करें? सर बच्चों को इंगेज रखते हैं क्लासरूम्स में कि बच्चे
जैसे मैं लो फील भी ना करूँ, मेरा भी इंटरटेन हो और बच्चे भी रहे। सर एक्सरसाइजेस करवाएंगे, बहुत सारे रिक्रिएशनल गेम्स हैं। सर स्पोर्ट्समैन थकते ही नहीं है सर। सर हम लोग को थकना अलाउड नहीं है। सर स्पोर्ट्समैन ठीक है, आपका कहना सही है, स्पोर्ट्समैन थकते हैं, पर हम लोग शो नहीं करते कि हम लोग थकते हैं। सर हम लोग ठीक है सर, हम लोग थक गए, बच्चे नहीं थके ना, उनको पता है कि मैम ने क्या सिखाया है। और थकना अलाउड नहीं है। दिस इज, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी कैन, वी एट टाइम वी फील लो। किसी दिन ऐसा भी होता है मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, कोई कहता है मुझे बाजार जाने के लिए, मेरी वाइफ कहती है मैं झल्ला जाता हूँ, and my sister-in-law is sitting and she supports many a time. Yes, we are having this that I am very much tired. Do you howl at your husband, ma'am? Do you howl at your husband? I take the basket and go to market. I instruct you howling. No, I take the basket and go market. Yes. Take this. Your husband is fortunate enough. I am not. Yes. So what exactly we were doing? That learning apart, all these things. Yes. सर मैं कुछ बोर्ड पे एक क्लू बना दूंगी, कुछ पिक्चर्स दे दूंगी और स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी कि कुछ सोचे, इनोवेशन कुछ नया सोचे और कोई स्टोरी मेंशन करके अपने नोटबुक में लिखे, फिर बारी बारी से मुझे सुनाए। हम क्या करते हैं, हमें पढ़ाया, and you see that peer learning is very effective. आप क्या करो, बैठ जाओ, कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल आपको कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हो। आपको क्या करना है कि अच्छे बच्चों को एक मीडियोकर बच्चे के साथ लगा दो। यस, और मीडियोकर बच्चे को बिलो एवरेज बच्चे के साथ लगा लो और बोलो पढ़ा देने की। और याद रखिएगा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। इसीलिए आपकी होल you are putting your class to the most effective way of learning. आप अच्छे बच्चे को मीडियोकर बच्चे के साथ लगा लो, तुम पढ़ाओ, एक ग्रुप बना लो। मीडियोकर बच्चे को, क्योंकि मीडियोकर बच्चा का लेवल जानते हैं, उसको बोलिए कि वो बेसिक चीजें जो है उसको सिखा दे, वो करा देगा, and everybody will be enjoying, and your class will be much more productive. आप कभी करवा के देखो, it works like miracle, it works like the next lesson. Go, Shaka.
ये कहानी आप सब लोगों ने सुना, Hare and the Tortoise, ठीक है? ये रेस हो रही है, clear? Think of, you need to think in different perspective. चलिए सर, next. पहला रेस जो है कछुआ जीत गया, खड़ा जो था, he was sleeping and the tortoise won the race. Next में खड़ा ने तो देखा कि नहीं इस बार मैं सोऊंगा नहीं, और खड़े ने रेस जीत लिया. क्लियर? चलिए नेक्स्ट सर. The destination has been changed. The third time the race was conducted, the destination has been changed. Okay. और destination क्या था? कि आपको एक रीव सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइए. डेस्टिनेशन है वाटर पे भी, ये ग्राउंड पे भी चलना है और वाटर में भी चलना है. ग्राउंड में भी चलना है, वाटर में भी चलना है. रेस दोनों को जीतना है. पानी में कछुआ के ऊपर खड़ा आ जाएगा. यस 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 एग्जैक्टली यस. दोनों दोस्त बन जाएंगे और जब जमीन पर चलेगा तो खड़ा के ऊपर कछुआ रहेगा और जब पानी में जाएगा तो कछुआ के ऊपर खड़ा रहेगा और दोनों रेस जीत जाएंगे. Destination will be achieved by both. This is teamwork. And you have won the race. This is the management principle. Without teamwork, we cannot win. आपके यहाँ एक्टिवेशन होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं. Not only single teacher is involved, the entire group of teachers, the entire team of teachers, they are in. And everybody is contributing to his or her own best. Am I clear? So this is the management principle and this is the principle in the classroom also. हुआ यूं था कि एक अफ्रीका में कोई अंग्रेज पहुंचा और उसने कहा कि जो रेस करो और जो जीतेगा उसको ये प्राइज. छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा और they shouted, "You Buntu, you Buntu, we have won." It is not the individual teachers who is winning in the class. It is the whole teacher who are winning in the school, and it is the whole teachers, the team of teachers, they are creating the brand name of your school or our school. So it is not the individual work, it is the teamwork that always matters. So next. The moral of the story is clear. मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, वो वाली कहानी खत्म हो गई. हम दोनों की साड़ी सफेद है. This is more important right now. Next.
एक समय अभी जो एक्सपीरियंसेस लर्निंग की होती है उसमें, और जो लेसन प्लान आप देखेंगे, अब उलटिए जो मैंने आपको दिया उसमें आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग का एक पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे शुरू से। We have half an hour left, तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे। देखेंगे ये नहीं होगा सर, एक और एक है सर नीचे। हाँ, नीचे। Two papers. Everybody has got it now? This one. और हमारी पर्पस इसी को डिस्कस करने की, इतनी सारे चीजें लोगों ने डिस्कस किया, जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट। आपको अगर अच्छा लगेगा आपके मैनेजमेंट को तो सर इस चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते। दोनों मैम को दीजिए। दिस वन ये हो गया ना, ये दीजिए, ये दो भी दीजिए। देखेंगे कि एक्सपैंडिंग द लर्निंग में एक चीज है, जस्ट इन ऑर्डर टू हैव द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी टेक्स्ट बुक्स एंड एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, जब आप इसको क्या करते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स mentally and physically both, as well as spiritually also. Art integrated learning, it's always a fun learning. So what happens that art is a subject and integration is a pedagogical tool. Pedagogical tool, it means that we are using art as the tool of learning. और ये आप सब लोग कराइए अपने क्लासेस में। हम लोग इस पर एक वीडियो देखेंगे एंड वी शैल हैव द अंडरस्टैंडिंग। अब एक मिनट, तो क्या होता है कि इट मेक्स द लर्निंग जॉयफुल। आपकी जो लर्निंग होती है, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम रोड लर्निंग टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन यू आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। रोड लर्निंग आपकी खत्म हो जाती है and then you are connecting with the outside world with the visualization. Art is always a visual medium, है ना। तो आप उसके साथ में करते हैं, और moreover when you are integrating art with the subject, you are making your students aware of the cultural heritage of India. Let us sir एक वीडियो होगी, दिखाइए।
learn maths through activities. So, we are back with another interesting art integrated activity for you. In this video, we will do an activity how to draw worldly art using triangles, circles and lines. For this activity, we need one A3 white thick sheet, some A4 white thick sheet, a ruler, a black marker pen, a pencil, a pair of scissors, a compass, a glue and a box of crayons. Aim of this art integrated activity is to draw a beautiful worldly art showing dancing tribal women using concrete and similar triangles, circles and line segments. Students, let's first learn about this magical worldly art. Worldly art is a style of tribal art mostly created by the tribal people in Maharashtra, India. This magical art form originated somewhere between 2500 BC and 3000 BC. This worldly art is centered on the concept of Mother Nature, and elements of nature are often focal points depicted in worldly artifacts. Also, worldly art uses a set of basic geometrical shapes like circles, triangles, squares and lines which came from observation of nature by tribal people. Like circle in worldly art represents sun and moon, triangle represents mountains and pointed trees, and square represents piece of land. So students, now let's make this magical worldly art by using basic geometrical shapes. To draw this worldly art, we will use the... So let's first revise what are congruent triangles. Two triangles are congruent if size and shape of the triangles are same. In other words, two triangles are congruent if and only if one triangle overlaps the other triangle completely. So it means in two congruent triangles ABC and PQR, angle A equals to angle B, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R. Also, AB equals to PQ, BC equals to QR and CA equals to RP. Now what are similar triangles? Two triangles are similar if their corresponding angles are equal, and second, if the lengths of their corresponding sides are proportional. Corresponding angles are equal means in two similar triangles ABC and PQR, angle A equals to angle B, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R. And length of the corresponding sides are proportional means AB upon PQ equals to BC upon QR equals to CA upon RP. Now let's start with the activity. Take A4 white sheet of paper and draw two similar triangles, one small and one big as shown here. Now carefully cut out these two triangles using pair of scissors. These are the base triangles for the worldly art. Color them with your favorite color. If you are enjoying watching videos on our channel, then do like, share and comment on our videos. Also, do not forget to subscribe to our channel Learning Notebook. Now students, first take the big base triangle and start drawing congruent triangles using it.
you have to make 32 such triangles. Now take the small base triangle and start drawing congruent triangles using it. Then carefully cut these triangles. Do you think that art is the best medium to teach mathematics through ODR? Learning notebook, आप इस YouTube पे जाओ, इस पे सारे सब्जेक्ट्स के आर्ट इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। राइट इट आप लोग चाहे डाउन तो लिख सकते हो, लिख लो ना है ना? सारे सब्जेक्ट्स के नोटबुक आपके ऊपर मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के आर्ट इंटीग्रेशन मिलेंगे। Learning notebook हमने ना? अपने स्कूल में छोटे बच्चों से, क्लास 4 के बच्चों से करवाया था, क्लास 3 में ही इसने टेबल है, 7 के टेबल हैं इस तरीके से किए हुए। 7 को अगर मान लीजिए यहाँ 7 1s are 7, 7 2s are 14, देखिए 14 है, यहाँ 2 लगा दिया, है ना? 7 3s are 21, यहाँ ऐसे लगा दिया। 7 4s are 28, यहाँ 4 है ये। And this is the best way to make your students interested to learn the thing. The art is a visual medium. और अगर आप उसको थोड़े से, इसलिए मैंने कहा कि कितने लोग हो जो सोचते हो कि कल क्लास में किस इनोवेटिव तरीके से मैं पढ़ाऊं so that each and every student should be interested and each and every student will be able to learn properly. So we need to improvise, we need to understand, and we need to innovate and create in the classroom. So next. Good. इसके पहले, now English teachers, we have very short span of short time. तो English teachers जो junior में noun पढ़ाना है, different types of noun. English teachers आ जाओ, please come. Go, Mamita, bit. Proper noun, common noun, material noun, abstract noun. Mamita, go. आई Rujit miss बोला सही English teachers check English teachers noun को पढ़ाना है. A noun is the name of a person, place or a thing. कैसे पढ़ाओगे आप? कैसे पढ़ाते हो? थोड़ा सा. Good morning, children. I hope you all are doing good. So today, I will not tell the topic. First, I'll just play a small game with you all, and then I will introduce the topic to you all. Fine? Thumbs up? Okay, great. We are seated in a hall, right? And we have a lot of different things around us, isn't it? Now, if I tell you to name a few things that you see around in this particular hall, could you please tell me? Fan, Notebook. So I got few answers. Teachers, pen, pencils, notebooks, chairs, tables, fans. my friends. My friends, yes. Now, when I'm asking that name few things that you see in the classroom, are you telling me that Miss, मैंने तो ये देखा, मैंने तो वो देखा, I saw this and I saw that? Are we using these abbreviations or these terms, this, that, ye, wo? Are we using this? No. For everything that we see around us, we use
a term for it, right? We have a particular name for it. So these names of different things are known as nouns. This is the first thing that we teach in parts of speech. There are 8 parts of speech. So the first thing that we teach is noun. So we got the basic concept that nouns are names. They are naming words. So can we say that whatever present in this hall is a noun? Yes. Why? Because everything present here, whether it is a human, it is a thing, whatever is there, it has a particular term for it, it has a particular name. That is why everything around us, whether it's your parents, your teachers, whatever you see around your environment, everything has a name and it is a noun. Noun is a name of a person, place, animal and thing. Thing. Okay. What's your name, ma'am? I am Poonam. I am a name of a person. I am noun. I am. You are a tiger. I am a tiger. I am a name of an animal. Yes. Okay. I am a book. I am a name of a thing. Clear? I am a pencil. I am a name of a thing. Make a role play. And if you want to, आप कलरफुल बना लो, किसी को शेप बना दो, किसी को पेंसिल बना दो, तो ये बना दो, everybody will draw. You get my point? And this way, this is art. This is our integration of art in the classroom. Make it happen in the classroom, and your no child will ever forget what is now. Because you have put them to activities. Give a big hand to all the teachers. Yes, you deserve this. चलिए next. Now, हम लोग collaborative learning के बारे में हम लोगों ने बात की. करना क्या है कि पहला बात हम लोगों ने क्या किया कि good students will be teaching to mediocre students. Mediocre students will be teaching to average students. And the learning that will take place will be much more effective than the learning that we as a teacher imparting the class. इस चीज को ध्यान में रखेंगे. और मान लीजिए एक लेसन को पढ़ा दिया, क्वेश्चन एंड आंसर आप जब कराते हो तो एक ग्रुप को तीन ग्रुप रो होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. One group will create the question and throw the question to the next group. Next group will answer. Next group जो है उसके बाद the other group will answer. Second group will throw the question. Other group will answer. In this way, what happens that a good number of questions will come, and they themselves will be creating the questions. तो आपको क्या मैंने शुरू में कहा था, you are now a facilitator. आप आराम से क्लास में बैठो. Nobody is going to tell you anything. Nobody is going to tell you anything because the learning. Then she will not say. Yes, exactly. Do it in the classroom and your principal ma'am will not say you anything. Ma'am, promise? Activities should be done, and mind you that I am just telling you the
the learning that will take place in the classroom will be much more than you are teaching in the classroom. Let it happen in the classroom right from tomorrow. Next. Communication. सब लोग जानते हैं verbal communication ये आप communications को क्लास में सिखाओ. How do you teach communication? There are many students who are shy of coming on the dais. They hesitate. कैसे सिखाओ? So give them a chance. Yes, yes. So give them a chance to speak out. Give them small topics so that they can. Yes. कौन सा टॉपिक देंगे आप, मैम? If I'm teaching in What you are teaching? English, sir. English. If Okay. I'm teaching English, I'll give small topics like talk about your class teacher or any of the subject Okay. or the subject which you like the most. You will give them the task. The parent will make them learn by heart. It's not like that, sir. In front of the class. During the class. During the class. Do you think that everybody will be able to speak? No, sir, not at all. So, a few Everybody will students, not the ones, those who are good in speaking, they will speak, and the ones. And rest of the students, out of 40 students, only maybe 5 to 10 students will be speaking. What about the 30 students? Sir, I'll give them chance also. How? I'll ask them to come in front. They At least will struck dumb. They will struck dumb. They won't come. They will come over here. They will stand over here. They won't be able to speak out. Sir, I'll help them out to. How? I'll give them the How? vocabulary. This is what I'm asking you. How? Your teacher name is this. Your teacher name is that. Will it be like that? So I'll ask them question. I'll ask them the question. Do you like Good, your good. teacher? Huh. Yes, I like my teacher. So the child will know how to frame out the Yes. Do you like me? Yes, ma'am. What is my name? This one, this one. Yes, sir. What is the best thing that you like in me? Ma'am, this one, this one, this one. Now start writing on the board. Teacher's name, qualities she has. Do you like my way of teaching? Yes, ma'am. Why? It is just because you make us understand in the most easiest way. This one. So what you are giving? You are writing all the points on the board, and then let your child, they will stand like this. The board is here. Let the child see and speak. All right, from the first bencher to the last bencher, everybody will be inspired to speak. Moreover, even if he or she is speaking not properly, if the pronunciation is not perfect, keep on noting. Help the child to speak, and after that work upon the child as per the need of the child. This is how you teach the communication. You speak, your speech must be decoded properly in the class. आप जो कहते हो उसको सारे बच्चे को ठीक से समझना चाहिए. It is your duty. Who is your best teacher? You remember your teacher who made you understand things, difficult things, in the easiest way. He or she is the best teacher. Be the best teacher in making a difficult subject understand in the easiest way. And the easiest way is just to give demonstration, put them to experiencing. Thank you very much, ma'am. Thank you. करना क्या है? How do you teach? How do you improve their writing? English में writing improve कैसे करो? So by following the cursive pattern, what we do is we not only confine handwriting to the Montessori level, but we also go for handwriting sessions till class 5.
calligraphy. Yeah, and also we go even for till class 2, standard 1 and 2. We initially do not start with the chapters or any grammar. Initially, we start with the handwriting, and that is the alphabets, not the words, the alphabets, cursive small and cursive capital. सीनियर क्लासेस में हमको राइटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करनी, सीनियर क्लासेस में हमको राइटिंग एबिलिटी इम्प्रूव करनी। क्या करो आप कि आप मेरे पास समय कम है, आप लेसन पढ़ाए, लेसन पढ़ाने के बाद जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हुए, tell the meaning of those difficult words, put them to framing their own sentences, and finally whatever difficult words they have learned, tell them to write the summary using all those words. Okay, you write all those words, give them when you are telling your student to write down the summary, in that case what exactly you do is that give them the points and give them you have to use these words. Okay, write down all those words on the blackboard, and after that you tell them to write. I will give them proper points. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. और सारी चीजों को दो and let them write. Help the child to write. There will be grammatical mistakes. No problem at all. Help the child to learn, write on their own. साइंस में अगर हम पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट ले रहे हैं, and now since हम लोगों ने इसमें 21st century स्किल में टेक्निकल जो बात है IMT, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी यूज, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर मैम, आप इफ यू फील इट लाइक मेक इट नेसेसरी, the PowerPoint presentation must be made it mandatory right from standard 4 onward. सबको बोला कि 10 नंबर के प्रोजेक्ट जो आप सब्जेक्ट एनरिचमेंट वगैरह में देते हैं ना, सब फालतू है, बहुत ज्यादा कुछ करने की। आप PowerPoint प्रेजेंटेशन बनवाओ हर सब्जेक्ट में। Let the child speak, let the child make their own slides, and let the child present. तो वो जो लर्निंग होगी, that will be much more effective than the subject enrichment में क्या होता है, बढ़िया से हैंडराइटिंग करा, ठीक है, it's a good, well and good. प्रोजेक्ट देते हैं, it's a well and good. लेकिन किसी पर्टिकुलर टर्म में, फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में आप पीपीटी को डाल दो। 4 onward it should be compulsory for each and every students to prepare PPT at least। मान लीजिए क्या कि 15 स्लाइड्स बनवाइए, 5 बच्चे के ग्रुप में डाल दीजिए, और 3 ये हर बच्चे जो हैं वो 3 स्लाइड्स को प्रेजेंट करेंगे। Make it compulsory, and you see that we have found it to be a miraculous class. Students are improving, their communication language are improving, and moreover their presentation skills are improving. Do it. Next. ये जो अभी हम लोगों ने बात किया, इसके पहले से इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ये जो हम लोगों ने बात किया, सब सारी चीज़ें वही है। नेक्स्ट सर, लाइफ स्किल्स पे हम लोगों ने बात किया, कोरोना पीरियड वाले एडेप्टेबिलिटी, हम कैसे अपने लाइफ स्किल्स को, हमारे लाइफ स्किल्स आपके लाइफ स्किल्स से डिफरेंट हो सकते हैं, आपके लाइफ स्किल्स उनसे लाइफ स्किल्स से डिफरेंट होते हैं। हाउ वी tackle the problem in our life, whatever the challenges we are having in the classroom, outside the classroom, in our life, and how we tackle those problems, it entirely depends upon the way we have adopted our life skills. Sir, next. चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है सारी चीजें, आइए सर नेक्स्ट। Now this is a very famous quote. You are a leader not by telling that I am the best. You will be the leader if you tell your people that you are the best. Tell your students that you are the best. Give them the right and positive self-esteem.
give them the right positive self-esteem. Let the self-esteem develop. Yes, I am the best. यहाँ से let us open it. आप देखेंगे कि सबसे पहला एप्लीकेशन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. ये जितनी चीजें हम लोग किया है वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन आवर डिस्कशन अर्लियर. Asking questions about their prior knowledge, that is 5 E's हमको करने हैं as per CBSE का जो NEP है उसमें 5 E को आपको लगाने हैं. पहला है engage. Engage का मतलब जो हम लोग normally करते हैं, we talk about the prior knowledge of the students. अब आप किस तरीके से अपने presentation को करते हो क्लास में, this is your domain. And the more effective you are, the more innovative you are, your children's attention will be towards you in that way only. तो अगर आप जितने ज़्यादा innovative होते हो उतनी ही ज़्यादा आपके children की attention आपकी ओर होगी and उतने ज़्यादा अच्छा learning outcome होगा. Next, 1 मिनट सर. उसके बाद क्या है? Content. First E is engage. Then E is explain. Now, explanation part is very important. Explain the याद रखिएगा कि आप जब आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को विद्वान नहीं बना रहे हो. यह दिमाग में हटा लीजिए कि आपको अपने बच्चे को सब चीज दे देनी. No. जो कंटेंट है, whatever the content is there in the chapter, those information must be communicated properly so that the skill and its application should be made at the end. करना क्या है कि always whenever you are explaining, हम लोग क्या देखते हैं, हमारे यहाँ भी टीचर हैं, बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि टीचर जो है भाषण देते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क कम करते हो. आई एडवाइस यू कि चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो या हिंदी पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क जुडिशियसली करोगे, इफ यू आर यूजिंग द ब्लैक बोर्ड जुडिशियसली, no students will be not able to understand. करना क्या है? You teach them. Point लिखिए और पढ़ाइए. Point number 1, points and sub points. Points and sub points. हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं क्लास में और लेक्चर देना शुरू कर देते हैं. हमारी विद्वता से कोई मतलब नहीं आपके स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को. हमको पॉइंट्स लिखने हैं, सब पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए. उसी में बताइए कि इसका ये क्वेश्चंस का इस पे अंदर ये आंसर होगा. अगर आप कर दीजिएगा तो each and every students will come next day by doing homework properly. नहीं तो आप भाषण दे के निकल जाइएगा, 50% स्टूडेंट करेगा, 20% स्टूडेंट नेक्स्ट डे जीटी करेगा दूसरे से और आपको सबमिट कर देगा. स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो इट इज द फॉल्ट ऑफ और इट इज द फॉल्ट विद इन अस. हम लोग दोषी हैं उसके. तो ये चीजें को ध्यान रखिएगा. हमको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी बदल देगी. क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में there must be teaching point wise and the coordinator or vice principal ma'am or principal ma'am, whenever she visits the class, she must find that
the teacher has written all the points and sub points on the blackboard, or she should go through the copies. अगर आप ऐसा करेंगे आपके लिए आसान होगा, सारे बच्चे उतने ही लिखेंगे जितना आपने पढ़ाया हुआ है। फिर जब आप एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस देंगे या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे सीनियर क्लासेस में, तो देखेंगे क्या कि जब सारे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एप्लीकेशन भी होगा, इवैल्यूएशन भी होगा और क्रिएशन भी होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाते हो। एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओके, देन एक्सप्लोरेशन, थर्ड इज एक्सप्लोर। एक टेल देम टू एक्सप्लोर इन द सराउंडिंग। जैसे अभी मोमिता ने क्या किया कि चिल्ड्रन व्हाट आर यू फाइंडिंग इन योर क्लासरूम, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर क्लासरूम। फिर आप क्लास के बाहर लेकर के जाइए। बायो टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप उसको बाहर लेकर के जाइए। क्लास में कैरी योर ओन प्रैक्टिकल टूल्स इन द क्लास। क्लास में माइक्रोस्कोप तो ले जा सकते हो, क्लास में प्रिज्म तो ले जा सकते हो लाइट पढ़ाने के लिए। कैरी योर प्रैक्टिकल रूम इनसाइड द क्लासरूम। Each and every students will learn. So when you are exploring, tell your students not to explore only inside the classroom, but they should explore it in the surrounding area also. And whatever you have taught to them, those must be correlated with the surroundings. And ask them. अब germination of seeds पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो हम बीकर में जो है germination तो बता ही सकते हैं। क्लासरूम में लेकर के आइए, धूप में रखवा दीजिए, सब बच्चे को बोलिए अपने अपने घर में एक पौधा जो है वो कुछ बेंगोल ग्राम और कुछ कोई भी चीज आप लगा दीजिए। पूछिए उनसे क्या कि आपके पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं। Somebody will say, मैम ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। Somebody will say, properly growing. Tell them the reason. पूछिए क्या आपने पौधे को प्रॉपर सनलाइट दिया था, सेमी शेड में रखा था या पूरा धूप में रखा था या पूरी छांव में रख दी थी। तो these are the things that you have to do it in the classroom. Next, एक मिनट सर। और एक्सप्लोरेशन पार्ट के बाद then it comes the expand. आप देखिए एक्सपैंडिंग है, एक्सपैंडिंग में ही आप आर्ट इंटीग्रेशन, अभी वर्डली आर्ट हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने उसका वीडियो देखा वर्डली आर्ट में कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को यूज करके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को यूज करके हम लोगों ने वर्डली आर्ट को फॉर्म किया। और वो जो वीडियो का जो मैंने बताया था कि आप उसको नोट डाउन कीजिए, आप YouTube पे जाइए, सारे सब्जेक्ट के वर्डली आर्ट, सारे सब्जेक्ट के आर्ट इंटीग्रेशन आपको उसमें मिलेगा। एंड फाइनली इज द इवैल्यूएट। तो एक्सपैंडिंग के बाद इवैल्यूएशन में द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू नो दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, दीज आर द नॉट, दीज आर द थिंग्स टू बी यूज्ड फर्दर, दीज आर टू बी डिस्कार्डेड। एंड फाइनली यह ध्यान रखेंगे कि आपके जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होंगे, आपके इवैल्यूएशन मस्ट नॉट बी ओनली द पेन एंड पेपर। आपको डिजाइन करने होंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग में आपको मार्क्स देने होंगे। क्वेश्चन आंसर जब आप पूछेंगे ओरल, उसमें भी उनको मार्क्स दीजिए। बच्चे जब पूछेंगे एक दूसरे से ओरल, उसमें भी आप उसको मार्क्स दीजिए। सो द कोलैबोरेटिव लर्निंग मस्ट बी देयर। आप सबसे फुटनोट्स देखिए उसका, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग देम। सबसे नीचे फुटनोट में देखेंगे इवैल्यूएशन में स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये आपके स्ट्रक्चर टेस्ट हैं जो हम लोग लेते हैं पेन एंड पेपर पे। जैसे एमसीक्यू दे रहे हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, आपको क्लास टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, केस स्टडीज। अब आप चाहिए तो आप 6 ऑनवर्ड केस स्टडीज लगा दीजिए, और केस स्टडीज वो
आपको इनोवेट करने होंगे, या तो आप गूगल पे देख लीजिए, अदरवाइज आप खुद इनोवेट कर लीजिए आपके सब्जेक्ट के साथ में। और आपको केस स्टडीज और पोर्टफोलियो जैसे, यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं उस पर जिस तरह से मार्क्स देते हैं, उसी तरीके से केस स्टडीज पर भी। केस स्टडीज हेल्प द चिल्ड्रन इन थिंकिंग क्रिटिकली। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑन द बोर्ड। आप कोई बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेन एंड पेपर के टेस्ट को मान ले रहे हैं, उसी से 90% आया तो बच्चा ठीक है, अदरवाइज नहीं। हो सकता है कि बच्चा जिस दिन उसकी एग्जामिनेशन हुआ हो उस दिन he is a child might not be feeling well. There may be certain reasons of behind the failure or not doing well in the examination. तो एक जो continuous evaluation है you must put into। हम लोग जो है PPT करा रहे हैं, PPT के ऊपर मार्क्स थे। किसी बच्चे का एक्सप्लेनेशन, कुछ बच्चे मान लीजिए कि नहीं आए, सपोज एब्सेंट हो गए एग्जामिनेशन, उन्होंने पीपीटी में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, बोर्ड पर आपने बुलाया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट, डिस्कस विद योर प्रिंसिपल और उसको मार्क्स दीजिए। ये नहीं कि उसने मार्क्स उसका जो है एब्सेंट हो गया तो उसको बैक कॉलम को एब्सेंट करके छोड़ दिया। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एक आइडिया दे दीजिए, प्रॉब्लम दे दीजिए and let the children discuss। उसमें से जो चीजें निकल करके आएंगी, बहुत ऐसी चीजें निकल करके आएंगी जो आप और हम नहीं सोचते हैं क्लास में। तो these are the things that we are putting our children to critical thinking, creativity, communication। और बोलने वाली कला को तो आप कीजिए ही, collaborative learning, these are the things। मीडिया लिटरेसी हम लोग कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स की दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर के 21st century स्किल्स हो गए। और इसी चीज़ को whenever we are teaching we are implying in the class। और इसी तक और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, it will help you। अब मान लीजिए कि आगे उसके पॉलिटी पेज को तो देखेंगे कि ये पार्ट है। अगर किसी के नॉलेज को, अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉलेज को अगर टेस्ट करना है तो आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे, डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, टेल एंड लेवल, ये डिफरेंट मोड है। अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने हैं तो ये क्वेश्चंस के मोड ऐसे होंगे। फिर आपको एप्लीकेशन के करने होंगे तो अप्लाई, इलस्ट्रेट, यूज, आर्टिकुलेट, रिलेट, कंप्लीट, यस, इस तरीके से क्वेश्चंस आप फ्रेम करें। और एनालिसिस का होगा इस तरह से, इवैल्यूएशन एंड फाइनली क्रिएशन। तो इस चीज को दैट कैन बी used as your blueprint if you feel it like whenever you are forming question, these things are going to help you, and I hope that if things are conducive for you, this lesson plan may be implemented from the next session. Sir. आप या तो रिटायर करेंगे या छोड़ देंगे। What you will leave behind? How? How? You are student। मैं बात कर रहा था ये मैडम से बैठ करके, जब हम लोग स्नैक्स दे रहे थे, मैडम का कोई स्टूडेंट था जो when she was there in नोएडा और दिल्ली में किसी मॉल में थी, और वो स्टूडेंट मैडम को बार बार कोशिश कर रहा था नजदीक आने के लिए। मैम की बच्ची ने कहा कि मामा मोस्टली ये तुम्हारा स्टूडेंट्स है। मैम ने कहा कि नो, मेरा स्टूडेंट यहाँ दिल्ली में था। He came, he finally greeted her और उसने कहा कि मैम मैं गूगल में काम करता हूँ। That is the best compliment a teacher can get when your students are well placed and they come to see you as a successful person. This is the best Guru Dakshina that we as a teacher get from our student. So always think, आप यहाँ ड्यूटी नहीं पूरा करते,
10 से 4 ड्यूटी करने या 8 से 2 ड्यूटी करने नहीं आए हो. Think always what exactly you are giving to your children. Think exactly what you are giving to your school. You are earning your bread and butter. Many of you. I am earning my bread and butter from my school. If I am not loyal to my school, then I don't believe and I don't deserve to be a teacher. Teaching is the most pious profession, and particularly the school teaching. And the most revered persons are those who are teaching in Montessori, LKG and UKG. They are the people who are planting the seedlings. And college वाले और university वाले तो grow करते हैं, वो reap करते हैं. But you people plant the seed, sow the seed, and let us make our community proud. अब कभी स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा कि जापान में जो लोग हैं वहाँ जो टीचर होते हैं उनको किसी क्यू में नहीं खड़ा होना होता है. They are the most revered person. उनको किसी क्यू में नहीं खड़ा करते. They are the most respectable person over there. क्यों? उन्होंने कंट्री को उस तरीके से बनाया. A time will come. We are revered person. As a teacher, we are God. मैंने जो पहला क्लिपिंग दिखाया था एरोप्लेन वाली, we are a God to our students. They trust in us. Let us repose our trust. Let us be loyal to our profession, and let us be loyal to our students as well as to the school or institution which are giving us bread and butter. So there must not be a gap between you and your students. वो gap को खत्म कीजिए. Now this is an implementation song. I would like to sing. Sir, next. Now, will you implement the thing in the school or not? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इतना भूख तो नहीं लग गई है आप लोगों को, इतनी भूख की yes sir बोलने में थोड़ा. Yeah, say. Are we going to implement the things in the school or not? Yes, sir. Are we going to implement it right from tomorrow or not? Yes, sir. Yes, sir. No. नहीं मैडम, मैं 2 बजे तक खींच रहा हूँ. Yes. ठीक है? Are you ready for that? 2 बजे तक के लिए? Sure? No, sir. जोर से बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are the best. We are the best. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. We are the best. We are the best. TPS is the best. TPS is the best. We are the best. We are the best. We are going to implement it right from tomorrow. Yes, sir. Chaliye. Who will come to sing it? This is we shall. This is on the tone of we shall overcome. We all should. Please stand up. Please stand up. Someone will lead right from here. Seema, come here. Mamita, come here. There are few people I know it very personally. Aye, sir. Some more person will be there. Yes, ma'am. Please come, Jalja, ma'am. Aye, madam. Yes. आप हाँ, इसको देखेंगे हम लोग. And we shall repeat it.
दूसरी माइक सर, पीछे दूसरी माइक। चलिए, this is the last part. Let us enjoy. 1, 2, 3, start. We shall implement. We shall implement. We shall implement every day. So deep in our heart, we do believe. We shall implement every day. Once more. We shall implement. We shall implement. We shall implement every day. So deep in our heart, we do believe. We shall implement every day. Thank you so much. We shall implement every day. Thank you so much मुझे इतने देर तक झेलने के लिए। Thank you. Now sit for 5 minutes more. We would like to I have, know that you will get so tired sitting in one place. we would like to have one, ma'am. Yes. What is the takeaway from this session? We would like to know what is the takeaway from this session. Anyone? और अगर आप नहीं बाहर आएंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि मैं बेकार इतने देर तक चिल्लाया। Yes. I would like to know what is the takeaway from the session. I tried my level best to engage you, entertain you. The teaching was there, the learning was there, learning was unfolding different things we have discussed with a good number of activities and all. I tried my level best to entertain you. I would like to have what is the takeaway from this session. Hello. Good afternoon, everyone, and good afternoon, everyone, and thank you to thank you to Principal Ma'am that she has arranged and called sir, and thank you, sir. We have learned so many things, although we all have done in our trainings and we are teaching and doing in our best way, but even few things we have revised and came to know in a different way that the things can be introduced in this way easily and make the students better understand. Thank you, sir. Some more. सभी का यथोचित अभिवादन। सर ने हम लोगों को एक लेसन प्लान का फॉर्मेट दिया, 5 E's, है ना, और सर ने उसको बखूबी निभाया। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एवरीथिंग। थैंक यू सर। Thank you. Good afternoon, everyone. I'm very much thankful to Principal Ma'am, especially calling sir as our resource person. Personally, I know sir, I think 20 years back, since 20 years back, and he was famous personality, he was a principal, everything. And moreover, today we have learned this patience, which is very much important quality for a teacher. That is the patientfully all the teachers we have engaged here, and sir made us engage. Number 1. Number 2, teachers is equal to P cube. I feel, I learned in my experience life that teacher is equal to T cube. What does it mean? P for plan, P for project, and P for presentation. And what sir did here, and we also done in our life, and we also will do, it's our promise, till we will survive. And the last thing is that one day we all will retire. But I feel that whenever I will retire from the school, at least everybody, each of my student, each of my colleague, my administrator, my principal, my vice principal, even my trustee member should remember me that yes, I am the best
We are the best. Thank you. Anyone else? Some more sirs, your presence is needed over here. I am here, but I'll not say much. I'll just say whatever you taught, you just implemented it. Whatever you taught, you implemented it, and this is one of the important sessions that I remember for long, because always I have gone for training, I was bored there. I was feeling bored over there, and I just feel sleeping. But here, the first time, or not only first, but a few training I have attended where I have just learned and just thought that I am getting something. Thank you. Anyone else would like to say anything? हेलो, थैंक यू सर। आज सच में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ सीखा है। यदि शिक्षक कृष्ण की तरह हो तो अर्जुन अवश्य ही बनेगा हमारा छात्र। एक अर्जुन जिसने इतने सारे क्वेश्चंस किए कृष्ण से, और उस आंसर देते देते उनके प्रश्नों का उत्तर देते देते गीता में क्या है, पूरा उपदेश ही भरा पड़ा है। तो यदि हम कृष्ण बनते हैं, कृष्ण का पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हमारे छात्र अर्जुन अवश्य बनेंगे। So now I think we have learned so many things, and hats off to sir. He has given his 5 hours continuously speaking with the patience. That is what the most important quality of a teacher. If you are having a patience, you can win. If you don't have a patience, you cannot become a teacher. So hats off to sir. Thank you so much, Sarani sir, that you are having such a good patience. I have not attended the whole session, but whatever I have attended, I got so many things to learn. That patience and listening to everyone, and I had appreciated the memory of sir. He remembered Momita, he remembered Priya, that they were the students. Being colleagues, it's very easy to remember, but remembering students, it's very difficult. We cannot remember with name. We remember with the face, but we cannot remember with the name. So that quality sir has, and thank you so much sir. And I know whenever I call sir, sir definitely come to us, and whatever sir has told today regarding the students, you start implementing. I know that you people are doing, I know that, but still when we revise some things, today sir has recapitulated all the things. So my wish that you should start implementing, and I want all the students, as Shalini said, ki Arjun hona chahiye, sare remember kare. That is what the Guru Dakshina is. So thank you so much teachers. So let's move now. For her enthusiastic support. Now we move to the end of today's session. Thank you and have a nice day. Have a nice day, sir.